Yeah, good morning, everyone. So, all set for the second day? Yes? Good. Why the strength is low today in comparison of the strength we had yesterday? Because of the midnight? Huh? Okay, fine. AMSU election. Okay, fine. So, uh, coming back to the second class, and that is the continuation of the first class itself, where we have to first of all see the summary of events after the introduction of NEFA Panchayati Raj Regulation 1967. Okay, and then we'll go to then we'll go to Arunachal Pradesh Panchayati Raj Act 1997. Right, this is what we have to cover today, and after that we'll start with the culture in traditional village council. That means we'll deal with different indigenous village council in Arunachal Pradesh, right, prevalent among different tribes, and that is one topic which is more important for your main examination, right? But the reference of the topic may be introduced, that may be found in one of the question related to polity section in GS paper. So you have to be careful here. You never know, right? Some of those facts may be picked up, right? The names may be picked up, okay? The geographical extent of those, right? The geographical extent of those different or various indigenous council can be asked. Number one. Then number two is you have to also briefly understand the functions, right? Sometimes they can confuse you by giving those statements, right? Whether those indigenous council enjoyed these functions like legislative function, political function, socio-economic function, right? The function and the responsibility to maintain peace, law and order, yes or no, right? So these all things are important in context of PT examination, but it should be right. It should be just a reference to the topic only, right? Don't go into the details, right? This is not the time to go into the details of, right. Though we'll be covering in detail here in the class, but again I am saying that is primarily important for main examination, right? But the reference of the topic from here and there can be picked up, and then one statement can be brought in one of the question, maybe one or two question in, right, in preliminary examination. You know the pattern of questions, right? Okay, nowadays you'll find majority of questions which are having, right, which are having 3 4 5 statements, right? Okay, and as I said, I was talking to some of my friends yesterday only, when they asked me about the chances of or the standard of question which we can expect in the coming preliminary examination. I would say that this is my feeling. I don't know, I have no substance, right, substance backing this, but I would say that 40 to 45% of questions in APPSC preliminary examination, which is going to be conducted on 15 December, those 40 to 45% of questions would be at par with the standard of question we have in UPSC. Believe me or not, right? Right? Obviously, you will believe me after 15th, right? But not now, because I cannot claim anything. Yes or no? So why I'm saying this? Because you know that this is your PCS or this is your commission, the state commission, which has adopted the UPSC syllabus and pattern in entirety, right? It is a just right. It is just a copy paste of UPSC syllabus. So you can understand, right, what would be the standard of question. So don't compare with other PCS examination like Nagaland PCS, right? Manipur PCS. Don't compare with that, right? Like in the last year, some of my friends told me that we had a very easy question in Nagaland PCS examination, right? That cannot be the standard of preparation for, right, for APPS examination. Are you getting my point? Okay, 40 to 45% question, believe me or not. Okay, right? Now, second thing, why it is say it is so, why it is expected? Because I feel that rapid political, social, economic changes have been seen in Arunachal Pradesh in comparison to any other state in northeastern region, right? Rapid. There is a revolutionary change in, right, in those institutional and administrative setup of this particular area, and that is in line with, that is in sync with the administrative pattern we have in all India. That means in, right, in this, that means in mainland India,
right? So I believe that whatever be the sources, whatever be the mechanism of setting the questions, they are going to follow the standard of UPSC, because that is the most trusted, right? And you know the history, right? I don't have to enter into that history part. You know how the controversies have been always associated with APPSC. Yes or no? So to deal with all those historical blunders, right, mistakes, errors, whatever you say, right, it has to be standard, and the only standard body, right, or the only body which we can trust for having those standard question is UPSC, right? That is why, I mean, there are many reasons to believe this. ठीक है, बहुत सारा मेरे पास लॉजिक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है. ठीक है, क्लियर? यस और नो? ठीक है. कल तो आप लोग बहुत यस यस बोल रहे थे, आज बिल्कुल. तो आज मैं मोटिवेशन नहीं करूंगा. ठीक है, लास्ट डे विल हैव 5 minutes मोटिवेशन सेशन, राइट? मे बी दैट विल हेल्प यू टू डील विथ, राइट, द सिचुएशन इन द एग्जामिनेशन, राइट, ऑन 15th. और वो इसलिए है क्योंकि आपको वही 5 मिनट याद रहने वाला है. ठीक है, और कुछ नहीं याद रहेगा. ठीक है, तो वो 5 मिनट को याद करना है और क्या करना है. ठीक है, यस और नो? Fine. So let us start with the first part, and then, yeah, good morning, everyone. So let us first of all deal with the summary. The first topic. Okay, so first of all, let us complete this topic, the first two topic, and then we'll go into the third topic, that is your traditional village council. So summary of events, right? You all know when this I said, what was the background of introduction of that NEFA Panchayati Raj Regulation 1967, right? When it was formally inaugurated, I told you, right? Formally inaugurated, right? Then 1969. You already know 3rd December 1969 formal inauguration. 1969 to 19 19 2. This is your period. Okay, fine. Now, what are the major developments here? I told you that in the year 1968, the Anchal Samitis were constituted, right? The elections to Jila Parishad was held, right? And formally it was inaugurated on 3rd December 1969, right? That means that was the formal day of the beginning of Panchayati Raj institution in Arunachal Pradesh, right? One more thing we should keep in mind: the year 1975. There has to be no confusion here, my friend, right? I told you by by which amendment? Tell me the amendment. Which amendment, right, constituted a separate legislative body known as Pradesh Council? 30 37th Amendment Act. ठीक है ना? प्रदेश काउंसिल का फॉर्मेशन हो गया, राइट? एंड फाइनली द प्रदेश काउंसिल replaced the agency council, gradually eventually evolving into an independent legislative assembly, right? First election was held in 1978, right? ठीक है, ये हम लोगों ने बात किया हुआ सारा.
अब यहाँ से क्या हो रहा है, जब लेजिस्लेटिव असेंबली बन गया तो व्हाट विल हैपन? Now, the Legislative Assembly became the premier legislative body of the state, and that was de-linked, right? That was separated from the district level administration. That means the Panchayati Raj institution which we have up to the district level at par with all India model of Panchayati Raj institution, right? That is one important development here, because you know that, right? You know the background, dying hearing committee recommendation, right? You know the introduction of four-tier, right? Four-tier institution of, right, institution of administration or, right, or governance in, right, in NEFA region, right, up to the agency level. That agency council has evolved into what? Legislative assembly now, right? That is the topmost premier body of, right, premier body making law, or you can say premier legislative body of, right, body of the state. So that has been de-linked, and now the, right, now the grassroots democracy exists up to the district level, having all those three tier. That means all those three level, right, from the village level to Anchal level, and then to, right, to Jila level. That is your, right, that is your district level, right? So we call it as Gram Panchayat at village level, Anchal Samiti at block or circle level, and then you have Jila Parishad. So that is, right, that is one more important development you have, right, you have here. From 1969 to 1992, right, 7 elections were held to panchayat bodies here, right? 7 rounds of elections were held from 1969 to 1992. Why we are taking 1992? You must, right, you must remember the 73rd Amendment Act. Yes or no? Right? 73rd Amendment Act, which introduced a uniform pattern, right? Uniform pattern of Panchayati Raj institution in, right, in the country, and all the states were under the obligation, that means constitutional obligation, to formulate, right, to formulate and devise, right, devise the institution of local self government according to the provision of, according to the provision of part 9 of the constitution that was introduced by, right, by 73rd Amendment Act, right? So Arunachal Pradesh again had the same obligation, right? And it had to bring, right, it had to bring that, what? It had to bring that bill, or you can say it was brought in the form of ordinance first of all, and then that finally culminated into the, right, into the making of that act which came into existence, which was, right, which was assented. That means the bill was given approval by the president in saying, right, in 2001. That means on 13th April, right, 13th April 2001, the assent was finally given, right? That particular act is called as Arunachal Pradesh Panchayati Raj Act 1919, right, 1997. Is this point clear? बात समझ में आ रहा है? So this is your period from 1969 to 1992, right? Seven elections, right? Seven rounds of Panchayati Raj, or 7 rounds of elections were held to, to the body of Panchayati Raj institution, because delinking has taken place when, you already know, 78, right? Delinking has taken place, right? And you have, right, you have now this, right, this three-tier body functioning up to, right, up to the district level from the village level. That means village to, right, village to circle level, and circle to the district level, and they are functioning independently, in conformity, in sync with the modern, right, the modern institution of local self government prevalent across the country, right? That is what, right, that is what we see in saying, right, in this background of development after, say, after 1967. ठीक है, बात समझ में आ रहा है? One more development you have to keep in mind. Now what is happening here? 1992. So the state legislative assembly, right, और इसके बाद याद रखना है एक और मेजर डेवलपमेंट, वो क्या है? 20th February 1987. मालूम ही है आपको, बोलने की जरूरत नहीं है, राइट? स्टेटहुड वाज ग्रांटेड, राइट, बाय 55th अमेंडमेंट एक्ट. अरे ये तो पढ़े हुए हैं ना, पॉलिटी में भी पढ़े, ठीक है? And the, right, and the strength of legislative assembly was increased to 60, right? Okay. So now you have, right, now you have independent legislative assembly of the state, right? Arunachal Pradesh has become a state in 1987 now, okay? And from here onwards, in 1992, what we have a, right, we have an obligation of the state towards, right, toward this constitutional amendment, and to, right, and to ensure that they have a body in, right, in conformity, in sync with the, right, the mandatory provision of, right, mandatory provision of Article 243 that was introduced by 73rd Amendment Act in Part 9. Yes or no? ठीक है? So 1992, right, the state was under constitutional obligation to, right, to bring, right, bring a law, right, and right, and I said, and provide legal framework
for the development of local self government or the institution of local self government in the state. Okay, right. So first of all, in 1994, it was brought in the form of an ordinance. It was given a shape of, or later on the ordinance was given the shape of an bill, right, that is called as Arunachal Pradesh Panchayati Raj Bill 1994. ठीक है, पहले ऑर्डिनेंस लाया गया, ठीक है, 1992 में ही, क्योंकि करना है आपको, ठीक है. You know that local self government is a state subject, ठीक है. But we should also keep in mind, never forget about the structure, the structure proposed under part 9 of the constitution, right. The whole part 9, I said the whole part 9 of the constitution divides those provision into two groups, right. One is your mandatory provision, the other is your, the other is your optional provision, or you can say that is free for the state to decide whether they want to adopt or not, but they cannot, that means they cannot violate the mandatory provision which have been enumerated in part 9 of the constitution under article 243. Are you getting my point? Okay, so this bill was passed on 9th September 1994. It was presented to the governor, and governor reserved that bill. ठीक है, बिल को रिजर्व कर लिया गया. Why? Because the bill did not have the provision of providing reservation to SC, right, which is one of the mandatory provision given under part 9 of the constitution, article 243, which, which clause? C, right. ठीक है, रिजर्वेशन नहीं था इसमें, तो उन्होंने बोला इसको रिजर्व कर लिया, right. The bill was not given approval. It was not assented by the governor, and that was reserved for the consideration by the president, right. In 1996, the bill was returned back to the assembly with some note, right. ये note है क्या क्या. पहला, there is no provision for reservation to SC, right. Number 2, the provision for direct election to gram panchayat is missing. Yes or no? So those notings were given back to the state assembly, and again, lot of deliberation took place in 1997 here. Finally, the state assembly again passed that bill, right. Again passed that bill, and it was again reserved by the governor. ठीक है, क्यों रिजर्व कर लिया गया? Because other provisions were accepted, right. Okay, election to gram panchayat, that was accepted, right. The tenure and duration of gram panchayat, that was accepted, but again the bill contained no provision for providing reservation to SC, right. In 1997, अब 1997 हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब क्या करें? Finally this deadlock is resolved by a high level meeting that was held between the honorable prime minister and the honorable chief minister of the state, and finally which amendment? 80 84 83rd amendment act was passed by the parliament, relieving Arunachal Pradesh from that obligation of having reservation to SC, because practically there is no SC population in the state, right. Is this point clear? ठीक है, रिलीव कर दिया गया, मतलब अब स्टेट को जरूरी नहीं है, इवन इफ दे आर वायलेटिंग, बिकॉज इफ यू वायलेट मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the law of the bill itself will become null and void. Yes or no? Are you getting my point? So finally it was I would say it was resolved by 83rd amendment act, and which relieved Arunachal Pradesh from making any provision for the reservation to SC. And then on 13th April, the bill, that means this particular bill क्या हो गया, फिर से कब पास किया गया? 1994. उसके बाद कब पास किया गया? 1997. ठीक है, right. So it was finally assented when? In the year 2001, right. Okay, and that law, that I said that I would say that particular bill became Panchayati Raj, Arunachal Pradesh Panchayati Raj Act. अब इसको हटा देता हूं, Act 1997. ठीक है, it was given a retrospective effect, ठीक है, since 1994. और मालूम है उसके बाद क्या हुआ?
the bodies, that means the panchayati bodies from 1992, right, 1992 it continued up to 1995. It was extended by 3 years. ठीक है, it was extended by 3 years. okay, बात समझ में आ रहा है? और याद रखना है, स्टेट बन चुका है, गवर्नर एक्सटेंडेड, ठीक है, अब यूनियन टेरिटरी नहीं है, ठीक है, गवर्नर एक्सटेंडेड अंडर विच प्रोविजन, सेम पंचायत नेफा पंचायती राज रेगुलेशन 1967, ठीक है, इट वाज एक्सटेंडेड अगेन, इट वाज एक्सटेंडेड इन 1996 फॉर 1 year, right, but practically the panchayati raj institution bodies, or you can say the institution of local self government in Arunachal Pradesh became defunct from 1995 to 2003. There was no such institution here, practically no institution. और ये background है इसका, why there is no such institution, because you have a constitutional deadlock here, right? Are you getting my point? A constitutional deadlock. The deadlock has been resolved when in the year 2001, right? And finally, first election was held in the year 2003. That means first election to panchayati raj bodies were held in the year 2000, right? 2003, and then we had the reconstitution, right? Reconstitution of those representative body, right, from the village level to the district level, according to the provision of क्या? According to the provision of क्या? 73rd Amendment Act, or you can say according to the provision of Panchayati Raj, right, अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1997. ठीक है, बात समझ में आ गया? This is your first election held in the year 2003. Then from 2003 we had election again held when 2008. फिर 5 साल के बाद लगातार हो रहा है, देख लीजिए 2013. ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्शन, सेकंड इलेक्शन, थर्ड इलेक्शन. ठीक है, देखो याद रखना है, 7 elections were held. मैंने बोला 7 elections were held according to the provision of this act, this regulation, in this period, right? After the introduction of that uniform system of local self government according to 73rd Amendment Act, in the form of panchayati, right, in the form of Arunachal Pradesh Panchayati Raj Act 1997, right? That was that began in 2003. First election was held 2008, second election, third election was held in 2013. Okay, and then one more development here, 2018, 5 साल होने वाला है. यू नो द मैंडेटरी प्रोविजन क्या है, टेन्योर कितना होना चाहिए, 5 साल का. ठीक है, सेम है, देखो पंचायती राज बॉडी से लेके लेजिस्लेटिव असेंबली, देन यू हैव पार्लियामेंट, राइट, बोलते ना, देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 months बिटवीन 2 सेशन. ठीक है, सब सेम प्रोविजन है, आप उसको सबको सिंक करना है. ठीक है, तो 2018 one major development taking place here, and the assembly, that means Arunachal Pradesh, right, state assembly passed a bill क्या करने के लिए, for removing अंचल समिति को हटा दिया गया, because that is an optional provision under part 9 of the constitution. ठीक है, that means if a state does not have a population more than 20 lakh, right, the state may not have अंचल समिति, right, and accordingly what happened, there was restructuring done in panchayati raj institution in the year 2018. ठीक है, 2018 में ये होने के बाद क्या हो रहा है, the last election was held in the year 2020. ठीक है, last general election I am saying, the whole general election, that means the election to the whole panchayati raj bodies across the state, right? ठीक है, तो क्यों गैप हो गया, आप समझ में आ रहा होगा आपको. ठीक है, right? Then recently, that means in 2022 and 2023, right, by elections were held, right? By elections were held because many of those seats, right, many of those seats in Jila Parishad, right, Gram Panchayat, they became vacant, right? Vacant because of what? Because of two reasons. One, resignation, and the other was natural death, right? बात समझ में आ रहा है? The recent held election to, or recent by election held to Panchayati Raj body in Arunachal Pradesh is in the year 2000, right, 2023. ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बाई इलेक्शन और इलेक्शन में अंतर है, याद रखिएगा. ठीक है, और yes or no? So the last general election to Panchayati Raj bodies has been held when, in the year 2020, right?
By-elections were held in the year 2022. By-elections. 2022 and 23, the latest one. ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो अभी हमने उसमें बहुत सारा डिटेल दिया हुआ आपको नोट्स में, ठीक है. देयर आर मेनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, राइट. तो प्लीज गो थ्रू दैट, ठीक है. कितना जिला परिषद है ना? 25 जिला परिषद. 245 क्या है? 245 हैविंग 245 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट. और उसके बाद कितने ग्राम पंचायत है, ठीक है, वो देखिए, है ना. तो आपको ये डिटेल ध्यान रखना है, कितने जिला परिषद, और याद रखना है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट, बिकॉज रिसेंटली सम न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड, ठीक है. और वो जब फंक्शनल हो जाएंगे तो वहां भी जिला परिषद होगा. अरे यस और नो, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. दिस इज द लेटेस्ट डेटा वी हैव, राइट, विथ रिगार्ड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, राइट. Coming to the provisions or the structure introduced by Arunachal Pradesh Panchayati Raj Act 1997. You already know the structure, same, right, same structure. Now you have two body, one at village level, that is gram panchayat, ठीक है, और दूसरा जिला परिषद. There is no अंचल समिति now, right. और फंक्शन क्या होगा आपको मालूम है, ठीक है. And we have discussed all the functions. Now, Jila Parishad, what the function we have for Jila Parishad? Obviously, supervisory, right? Making plans, yes or no? Taking developmental initiatives for the entire district. Okay, is this point clear? Gram Panchayat, right? Gram Panchayat will follow, right? Will follow a role of executory, right? Executory body. That means they are going to execute the plan, right? Are you getting my point? They are going to execute the plan. They are not going to make the plans, right? Planning would be done at the district level, Jila Parishad level, and then execution would be done by Gram Panchayat. Okay, same thing, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है. जो अपने ऑल इंडिया स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है, सेम वही बात है यहाँ पे, ठीक है. नो डिफरेंस, राइट. इज दिस पॉइंट क्लियर? So this is what you have to keep in mind for, right, for I would say for your mains examination as well as for your PT examination. इसमें एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेंस पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखते हैं, तो you'll find that you'll not find a direct question on, right, on Arunachal Pradesh Panchayati Raj Act 1997. This is what I believe. Okay, are you getting my point? They would be asking you about the evolution of discuss the evolution of Panchayati Raj institution in Arunachal Pradesh, right? And that will take you to the history, yes or no? That means you have to deal with the historical perspective, right? You have to start from dying era, yes or no? Maybe you can go back and you can mention, right? You can mention Indo-China War 1967, okay? You can talk about the change in the attitude of government of India towards NEFA, okay? अरे yes or no? थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, मतलब you have to summarize and send, right, and you know that you have a word limit, right. 10 मार्क्स है तो कितना लिखना है आपको मालूम है, 150 वर्ड्स, राइट. 15 मार्क्स तो 250 वर्ड्स, yes or no? तो you have to accordingly you know, draft your answer, right. Which part has to be given more weightage, right. What are the watershed development after 1962, ठीक है. तो वाटर से डेवलपमेंट पे फोकस करना, मेन डेवलपमेंट पे, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट पे, ठीक है. एंड दैट विल हेल्प यू टू कंसाइज, राइट, और श्योर दैट विल हेल्प यू टू व्हाट मेक योर आंसर मोर एंड मोर कॉम्पैक्ट, राइट. ऐसा ना हो कि आपने कुछ छोड़ दिया और वर्ड लिमिट खत्म हो गया, ठीक है. इज दिस पॉइंट क्लियर? तो समरी इज मोर इंपॉर्टेंट हियर. ओके, इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, you know, you study the entire universe, right. You try to take control of entire universe, but ultimately in the examination you have to present the atomic level of the universe, right. ठीक है, just atom देना है, मतलब summary, right. If you have 4 or 5 points, you would be able to elaborate and you would be able to write one answer. Okay, clear? So this is regarding your first topic.
Yes, happy Constitution Day to you also, my friend. Today is कौन सा दिन है आज? अच्छा बात. बहुत लोग प्रियम्बल ही भूल जाते हैं ना. यस अन्ना. अन्ना मैंने आपको अनम्यूट किया है. आप कुछ पूछना चाहते हैं? नो. ठीक है. So as I have already highlighted the importance of this topic and what you have to focus on, right? From mains or from preliminary perspective, that means right. That means when you are dealing with the preliminary examination, what you should focus, क्या आपको देखना चाहिए, ठीक है? और मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? दिस पॉइंट क्लियर. और मेंस में भी जो मेरा मानना है क्वेश्चन पूछने का जो उम्मीद हो सकता है यहाँ पे, वो यही है कि देयर वुड बी ए क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन right, with regard to the challenges faced by challenges, right? The challenges faced by traditional or indigenous village council in Arunachal Pradesh after the introduction of modern institution of local self government, that is right, that is after नेफा पंचायती राज रेगुलेशन 1967. वहीं से मॉडर्न इंस्टीट्यूशन शुरू हो गया है ना. और यस और नो. तो क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है? एंड हाउ रेलेवेंट दे आर टुडे, दैट मींस इन द कंटेम्पररी, right, in the contemporary society, how they are still relevant, right? What functions they have, right? And how they help in maintenance of peace, harmony, yes or no, right? How they help in avoiding or diffusing intertribal disputes or intertribal conflicts, yes or no. So this is what we have to focus on. मतलब मेंस के हिसाब से मैंने पहले आपको बोला, आई हैव कमिटेड टू यू दैट before, right, I mean just after the declaration of PT result, you'll have some model questions on the topic so that you can prepare beforehand, and right, and some of those 5-4 topics, right, just 5-4 topics and some model questions, ठीक है? उसको prepare कर लेना, nothing else, right? This is going to help you to deal with one of the topic which is going to come from Arunachal Pradesh in essay paper. याद रखना है, ठीक है? Is this point clear? अरे ये बात समझ में आ रहा है ना? चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है? You are studying political, right? Political development, right? Anything, right? So these all discussions will ultimately, right, help you to develop a cumulative, right, a cumulative knowledge, right? And if you have those points with you, you just have to elaborate and write an essay. That's it. ऐसे के लिए कुछ अलग प्रिपरेशन नहीं करना है, राइट? बट स्टिल after the PT result, I'll ensure that you have a dedicated essay class also. I'll be taking the lead here, ठीक है? थोड़ा उस पे आपको मैं, because you know the paper carries the same weightage, right? 250 मार्क्स ना, इंपॉर्टेंट है. अगर उसमें हम लोग कुछ थोड़ा सा स्केल अप कर सके, थोड़ा सा एज ले सके, तो हमारे लिए बहुत बेहतर है ना? अरे ऐसे में लाओ या जीएस में लाओ, सबका तो 250 है ना, yes or no? तो इसलिए मैंने फाइनली सोचा हुआ है, I'll devote some 10-12 days, right? I'm making plan for it, and then you'll have dedicated essay class. Okay, fine. चलिए, ये सब तो बात फ्यूचर का बात हो गया, ठीक है ना? अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस में, है ना?
तो अ, क्योंकि आप लोग आज थोड़ा सा निराश लग रहे हो और लो एनर्जी लग रहा है। कल किसी ने मुझे लिखा था कि सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, ठीक है, और उसी के बाद जो डिप्रेसिंग बात किया, किसी ने बोला आप बहुत जल्दी बूढ़ा हो रहा है ना। तो ये बहुत खराब लगा मुझे और इस वजह से मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ, ठीक है। तो अब वो दोस्त को मैं ढूंढ रहा हूँ, वो है कौन दोस्त मेरा, ठीक है ना। एक तरफ तो हैंडसम बोलता है, दूसरी तरफ बूढ़ा बोलता है, क्या मतलब है? अरे बूढ़ा तो सबको होना है ना एक दिन, राइट। किसने मतलब अमृत लेके आया है यहाँ पे? कोई है क्या? ठीक है कोई? नहीं ना, ठीक है। तो एनीवेज, टिल योर लास्ट ब्रेथ, हाँ, you remain young at heart. If you are right, if you are a person of integrity, you will always remain young, right? ठीक है। और अगर आप, मालूम है आप, उसके बाद डैश डैश डैश, हाँ, उसके बाद नहीं बोलना है, ठीक है। तो अगर वो है तो you would be always young. If you are revolutionary, you would be young. That is why we always say that communist people are always क्या, revolutionary people are always, हाँ, and capitalistic are always fat and, है ना, ऐसा आइडियोलॉजिकल है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं कि ये फाइनल है, ठीक है ना। बट स्टिल राइट, यू कैन सेकंड राइट, यू कैन take some cue, some right, some idea from those ideologies, right? So I don't have any ideology, I have only one ideology, and that is to work hard, that's it, right? I'm a laborer, nothing more than that, okay? लेबरर मतलब वैसा वाला नहीं, ठीक है ना, गड्ढा खोदने वाला नहीं जो गड्ढा खोद के भर देता है, ठीक है ना। उनको जैसा बोला जाता है वैसा करते हैं, ठीक है। लेबरर बाय माय ओन चॉइस, राइट, ओके। Is this point clear? So this is I mean the second topic we are dealing here, and yesterday one more comment was there during the class regarding the duration of the class, कि सर 3 घंटा, 3.25 घंटा आपने लेके हम लोग को बर्बाद कर दिया, ठीक है। हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए, लंच नहीं कर पाए, बहुत सारा बात उन्होंने लिखा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली सर इसको 2 घंटा करने से ठीक था, है ना, या 2.5 घंटा करने से ठीक है। तो गुड न्यूज इज दैट टुडे विल ट्राई टू रैप अप बिफोर 1, राइट, ठीक है। कोशिश करूंगा कि 1 बजे से पहले आप लोग को छोड़ दिया जाए, ठीक है, ताकि आप लोग आजाद फील कर सको, है ना। और फिर आजादी से क्या होगा मालूम, ठीक है ना, जरूरत से ज्यादा आजादी ठीक नहीं होता, ठीक है। तो सेल्फ रेस्ट्रेन इज इंपॉर्टेंट, यस और नो। एंड इन दिस आर स्पेशली you are left with only right, only 19 right 18 19 days practically, right, 18 19 days, 18 19 days only, right, you are just 18 19 days away from the examination, ठीक है। तो बस उसी पे फोकस रखना है, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ये इधर उधर मत भाओ, किसी का कोई ऐसा चीज में मत फंसो जहाँ पे पैर टूट जाए, है ना, सर फट जाए, ठीक है, हॉस्पिटलाइज हो जाओ। ये सबसे, इसी को बोलते हैं बैड लक, राइट। जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन यू फॉल सिक ना, दैट इज बैड लक, राइट। बैड लक ये नहीं है कि यू आर नॉट सिलेक्टेड, राइट। Bad luck is that you are not given an opportunity to participate in the process, right? This is what I think as bad luck, right? तो बैड लक से बचना है, ठीक है। इधर उधर मत घूमिए रात में, ठीक है, नहीं कि चलो बंदरदेवा में फ्रेश हवा खा के आते हैं, ठीक है ना, होलंगी में पिरामिड को देख के आते हैं, ये सब मत करिए, ठीक है। थोड़ा दिन के लिए अपने आप को कंट्रोल, ठीक है, फाइन। सो let us come to this topic of traditional village council or indigenous village council, or you can say a system of governance, right, a system of local governance, you can say, prevalent among various tribes in Arunachal Pradesh, right. Now when you deal with this topic, right, what should be the structure of your answer, what should be the structure of your discussion, what should be the right, what should be the structure of deliberation, that means where you have to focus on. Are you getting my point? Okay, there are so many terms, right? You may get confused. You may not be able to remember, yes or no. You may not be able to recall. Okay, so it's right. It's better to have a structure before we start, right? Before we start this topic of indigenous village council. So, according to my assessment, I have developed, or I devised 6 broad aspect of the topic. There are 6 broad aspect, ठीक है। The first one is your historical perspective, और मेरा बस यही सबसे बड़ा कमाल है जो अपने मुंह से नहीं बोलना चाहते, लेकिन मैंने आपको बोला मैं पढ़ता कम हूँ सोचता ज्यादा हूँ, ठीक है।
है ना, लिखता कम हूँ सोचता ज्यादा हूँ, तो सोचेंगे ज्यादा तो अच्छा कुछ निकल के आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इफ यू आर, बिकॉज इन माय यूपीएससी अटेम्प्ट आई हैड हिस्ट्री एज माय सेकंड ऑप्शनल, राइट, सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब पुराना जमाना का बात कर रहा हूँ। अभी तो एक ही ऑप्शनल होता है ना, आफ्टर 2011 यू ऑल नो, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ सीसैट ना, अर्लियर वी यूज्ड टू हैव टू ऑप्शनल ना, दो ऑप्शनल आपको मेंस में लेना, यहाँ भी था पहले, आपको मालूम ही है, ठीक है, 2019 से पहले, है ना, अरे यस और नो। तो ये एडवांटेज है मेरा कि मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देखता रहता हूँ, ठीक है, एंड माय फर्स्ट ऑप्शनल वाज ज्योग्राफी, राइट, so that will take us, right, take us to the second, right, second domain, and what is that? Geographical spread, ठीक है, clear? Then third, the socio-political structure, ठीक है, the socio-political structure, clear? Then, right, then you have so these are your six broad, right, broad aspect of the topic, right, the topic of indigenous village council, ठीक है. So what we should focus on, historical perspective. Let me, right, let me talk about this. I mean, just in 1 minute. Why say why, right? Why we are talking about historical perspective? That means, right, that means the, right, the antecedents, right, the antecedents of evolution of those institutions among, right, among various tribes, right. It was not, right, it was not a one-time development, right. Yes or no? Those institutions have evolved over a period of time, right? What historical developments have taken place, right? What are the regulations we have? You already know Assam, right? Assam Frontier, right? Administration of Justice, right? Justice Regulation Act 1945, right? The whole indigenous council or village council were given village, that means they were treated as village authority, right? And they were brought under the general framework of the regulation 1945. Okay? That is your historical perspective you have to deal with, right? Now when you come to, right, I mean further deliberation, right, or further say further deliberating on the historical perspective, you can say, you can see the changes which have taken place in the political structure, right, in the political structure of those institutions within different tribes, right. Like when we talk about Kebang system, when you talk about Bulliang system, right, okay, it was not a one, right, I said we now know it as Kebang system, but do we, right, I mean, do we have the same institution which was started initially among Adis? No, right, it has undergone historical evolution, right. Okay, so this is your historical perspective, first of all we have to focus on, ठीक है, ये हम लोग को देखना चाहिए, if at all we have some source, right. Okay, second is the geographical spread, ठीक है. Obviously different institutions are, right, are prevalent among different tribes, right, and those tribal populations are concentrated in some geographical, right, geographical locations, some geographical territories, yes or no. That means some of the districts, now you can say the administrative unit now. Okay, so you can talk about the geographical spread, right, you can talk about their, right, their demography, yes or no, you can talk about their total population, right. These two things can be brought here under geographical spread, मतलब टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, ठीक है, दो चीज क्लियर. देन कमिंग टू द सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राइट, व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस, यस और नो, and how say how, right, how that structure has evolved, because
you must, right, will follow that. Will see many tribes having different, right, different label, right, different branches, right, branches of those local self institution, dealing with different mandates, dealing with different issues, right? Yes or no? One branch dealing with developmental issue, the other branch dealing with judicial issues. Yes or no? So this is your social, right, socio-political structure, that is also important, right? If you follow that, that will help you to deal with, right, deal with those indigenous, right, indigenous village councils, right? Then, right, then comes, I mean, this is once one beyond, right, beyond the indigenous village council. They may ask you the inter, right, the inter, I would say the inter-tribal relationship, right? What kind of relationship we have, right? And, right, and how these indigenous council have been able to maintain harmony, right, harmony among the tribes, right? Harmony and peace among different, right, different tribes. This is what we have to see. And, right, and that again emanates from the political, right, the political mandate which has been given to the indigenous council, followed by, practiced by different tribes in Arunachal Pradesh, right? After dealing with this, you can move on to the functions, right? और functions का जब बात करें, तो सारा functions को आप क्या करोगे, एक इस तरह से सारे functions को आप एक जगह पे कर दो और सबके लिए applicable हो जाए, ठीक है? Is this point clear? सबके लिए applicable, कुछ याद ना है तो कम से कम इतना तो लिख सकते हो ना, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस, राइट, मेंस स्टेज, राइट? तो फंक्शंस में क्या क्या फंक्शन है? ऑब्वियसली पॉलिटिकल फंक्शन, पॉलिटिकल फंक्शन, ओके, देन व्हाट? चलिए, जुडिशियल फंक्शंस, वेरी गुड, डेवलपमेंटल फंक्शन, सोशियो इकोनॉमिक फंक्शंस, and the last one, religious और कल्चरल, राइट, कल्चरल फंक्शंस, ठीक है? इसके बाहर कुछ मिलेगा ही, इसके बाहर कुछ है नहीं, ठीक है? अगर आपने ये 5 फंक्शन को समझ लिया, you can copy that and paste for any, right, any indigenous council, right? As far as that function is concerned, right? Is this point clear? Yes or no? ठीक है? So this is about the function. Now you have understood the function. Coming to the challenges, ठीक है? Challenges में क्या आपको देखना है? Comparison, right? Comparison made with क्या? The modern institution of local self government. That means you have to, right, compare, you have to compare those indigenous, right, indigenous institution with, right, with the modern institution of local, right, local self government, and how right, how they, right, how they are facing the challenges from those institutions, and they are on decline. Yes or no? They are on decline. ठीक है? बात समझ में आ रहा है? तो क्यों ऐसा है ये समझना पड़ेगा, ठीक है? Why say why, right? Why the authority, right? Why say why the respect, right? Why the reverence for the indigenous institution are on decline, right? We have to understand this, right? Okay, and you know, the indigenous institution or any institution, right? Be it political, administrative, social, economic, any institution is not, right? Is not, right, is not functioning, or it will not function in isolation. It, right, it functions within the broader, right, within the broader stream, broader development, right, broader development taking place in the state. And that means, right, that means your, right, that means your economic development, right? How economic development is bringing a change in the outlook, right, outlook of those, right, those, right, the attitude of those indigenous institutions, because these institutions are, right, are respected, revered. These institutions are, say, are given mandate. They enjoy authority because people follow them, right? If people do not, say, trust, right, trust those institutions, obviously, right, obviously they would be on decline, right? So in case of judicial matter, right, in case of dispute, people now prefer going to, yeah,
going to the normal, right, the normal modern, right, modern system of jurisprudence, and slowly gradually they are being now devoid of, they are being now devoid of judicial function, right. Developmental, the gram panchayat, right, the ground, right, gaon budas now, right. Okay, so these gram panchayat obviously enjoy more power now in the developmental matters, right. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है उनका, बात समझ में आ रहा है, their power, right, authority, their power, their function is being curtailed after the introduction of modern institution of local self government. ठीक है, this is what we have to focus. If you follow these six broad aspects, the topic would be very easy to cover. ठीक है. Okay, now coming to the classification of देखो, अभी फिर समझ लेना है कि what we have discussed just now is with regard to the approach we need to follow while we take up this topic, while we deal with this topic. ठीक है, क्या अप्रोच होना चाहिए? These are the six broad aspect, right? Focus on these six broad aspect. You would be right. Would be always having a focus study, right? ठीक है, because that is going to be asked in the examination. ठीक है, इसके beyond कुछ नहीं होगा. Clear? दूसरा बात, now we are dealing with those respective institution of local government, those respective institution of what of governance which was prevalent among the tribes before the introduction of modern institution in Arunachal Pradesh, right. So when we follow those traditional or indigenous village councils, right, in Arunachal Pradesh, those village councils can be classified on the basis of different criteria, right? On the basis of different criteria. That means your kinship, yes or no? Networking, the family relationship, clan-based, right? I said clan-based institutions, yes or no? So when you follow the classification of those traditional village council, the traditional village council in Arunachal Pradesh,
So when we see those village council, the indigenous village council in Arunachal Pradesh, right, on the basis of their constitution, right, that means the mandate, okay, how they are constituted, yes or no, and their functioning, okay, on the basis of their constitution and right and functioning, they can be grouped under three categories. That is democratic, that means some village councils are democratic in nature, right? Some village councils follow chieftainship, that means they are based on hereditary, right? And some are based on gerontocracy, that means right, that means some village councils are guided, they are administered, they are what, they are right, they are carried forward, or they are governed by elders among the society, right? Elders, right? Gerontocracy का मतलब होता है group of elders. Are you getting my point? Group of elders. So these are the right, these are the categories of institution, we can say, we can identify on the basis of their constitution and functioning, right? Then right, who are the tribes, or right, or I mean, what are the tribes among which we have democratic institution, or they follow democratic institution? Tribes which follow chieftainship and the tribes which follow gerontocracy. ठीक है? तो कौन कौन से ट्राइब है देख सकते हैं. डेमोक्रेटिक में कौन कौन आते हैं? आदि, गालो, देन मोमपाज. ठीक है? ये जो इंस्टीट्यूशन फॉलो करते हैं, इनका जो इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन है वो कैसा है? That is democratic. And when I say right, when I say democratic, that means presently it is considered as democratic, right? Okay, because some of those indigenous council have evolved, right? Evolved from what? Evolved from right, from aristocratic nature, right, to say to theocratic nature, and finally they have become democratic now. Are you getting my point? Monpas are the best example, right? बात समझ में आ रहा है? तो आज के डेट में, ठीक है, आज के डेट में हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो तीन तरह का हमको इंस्टीट्यूशन दिखता है. डेमोक्रेटिक तो मालूम है ना, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, राइट? यस और नो? वेरी गुड. चिeftainship किसमें कौन कौन लोग फॉलो करते हैं? नॉक्टेज, वांचो, देन सिंगपो, देन खामती. These tribe, they follow chieftainship, right? That means their institution of local government is headed by a person who क्या क्या है वो, who is the chief, right? Chief, not right, not because of merit but because of birth, right? Yes or no? So that is based on what? Hereditary, right? These are hereditary institutions, okay? And then you have gerontocracy, that is prevalent among Apatanis, then Serdukpens, okay? So these are your broad right, broad category of institutions we have, right? Also the value system among those institutions are right, are grouped under those three right, three category: democratic, chieftainship and gerontocracy. बात ये इसको समझ में आ गया क्लासिफिकेशन क्यों ऐसा है? ठीक है? Now we'll take up the democratic institution first of all, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है. ठीक है? Right? We'll deal with two institution here, and my Galo friend don't get discouraged ना कि भाई आपने हमारा क्यों नहीं बात किया. तो उनके बारे में भी मैं बोलूंगा 5 मिनट के लिए, लेकिन सबसे अगर तीनों में सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यू कहीं फॉलो किया जाता है तो इट इज अमॉन्ग द गालोज, राइट? गालोज इटसेल्फ, क्योंकि वहां पे लेंदी डिस्कशन चलता है, डिसीजन जल्दी होता ही नहीं. ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? बहुत डिस्कशन चलता है, इफ बट सब कुछ, ठीक है, खत्म ही नहीं होता, चलते रहता है. ठीक है? यस और नो? So this is your right, this is your reason why we'll have a general discussion on on the I said on the system of governance followed by Galos, right? But we'll basically deal with these two, right? These two I would say institution, right? That means these two tribes and the institution followed by them. Okay.
देन विल कम टू दिस एंड दिस, ठीक है, इस तरह से हम लोग जाने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डील विथ द इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन फॉलोड बाय आदिज। और जैसे कि मैंने कल ही आप लोगों से माफी मांग लिया है कि अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो माफ कर देना है ना। और अगर कोशिश तो यही रहेगा कि क्योंकि मैं सेकुलर प्रोनाउंसिएशन करूंगा, है ना, और आपका लोकल टच होगा, है ना, तो दोनों में थोड़ा अंतर हो सकता है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज ठीक है। सो दिस इज राइट, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट, दैट इज केबांग सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? और अभी तो मैंने स्ट्रक्चर दिया ना आपको, ठीक है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, राइट, historical perspective, right? So when you talk about, right, historical perspective, don't follow two things, right, don't forget two things, right. Number one, right, number one is the, right, is the regulation, right. Regulation क्या है? असम, क्या, बोलो, आप बोलो, मुझे तो पता है, ठीक है, आप बोलो। असम फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रेगुलेशन, असम, सॉरी, असम फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ट्रैक्ट रेगुलेशन 1945, ठीक है, राइट। So that is the, right, that is the I would say governing framework, that is the broader framework that is followed among, right, among the adis. That means they have been recognized, right, and they function according to the, right, according to the general, right, general mandate, general, right, general framework developed by, right, developed by that 1945 regulation. So this is first point we should keep in mind. Coming to the second point, right, now you will find, right, you will find a, I said, you will find a hierarchy, right, you will find a hierarchy, right, hierarchy of kebang among the adis, which was not, right, which was not originally, right, which was not originally prevalent among them, right, when they had limited population, right, when they had, right, when they had small concentrated population. So, right, so there was only one type of, right, one type of kebang during those days. That means during, say, during those previous, or you can say during those historical days, when the population was limited, they used to have only one kebang, that is your dolung kebang, right, matlab kebang at village level, right. Now you have kebang, right from the family level, dusum kebang, right, dolung kebang, then you have bango kebang, that is at, right, block level, and then you have bogum bokang kobang at kya, that is the highest, right, highest appellate authority, right, ठीक है, judicial wing है, the highest supreme judicial wing of, right, of kebang, right. And then you have one, right, one wing of kebang, that is your adi bane kebang, right, abk जिसको बोलते हैं, right, which is mainly, right, mainly concerned with social issues, not the judicial issues, right. The highest appellate authority among, right, among the, right, among the kebang is your बोगुम बोकांग केबांग, राइट, ये सबसे हाईएस्ट जुडिशियल विंग है उनका, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग को याद रखना है कि हिस्टोरिकली ऐसा कुछ नहीं था, एक ही केबांग होता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि इवन टुडे द मोस्ट इफेक्टिव केबांग इज योर दोलुंग केबांग, दैट मींस द केबांग एट विलेज लेवल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो दिस इज राइट, दिस इज व्हाट वी सी इन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, राइट। Just 2-3 points, okay. Coming to the geographical spread. Geographical spread मतलब concentration of adis, right, their population in, right, in Arunachal Pradesh. तो कहाँ पे आदि population है?
सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड कहाँ है? सियांग, ठीक है ना। और फिर सियांग का नाम याद रहेगा तो उसके बाद आगे बोलने की जरूरत नहीं है। क्या क्या बोल सकते हैं फिर? वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग, ये सुनो, अरे ये सुनो, लोअर सियांग, हाँ, फिर लोअर दिबांग, ठीक है। ये सारे एरिया है जहाँ पे आदिज मिलते हैं। इनका पॉपुलेशन कितना है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? और कोई भी दिमाग अपना मत लगाना, ये इधर उधर का देके डेटा मत बताना कि आपने गलत लिखा हुआ। मेरा बिल्कुल ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल सेंसस, सेंसस ऑफ इंडिया 2011, वहां से एक्सेल सीट डाउनलोड करके मैंने सारा फीड किया है, ठीक है। दिमाग अपना मत लगाना, ठीक है। कोई बोला 2020 में इतना प्रॉब्लम, मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। सेंसस आएगा, डेटा का बात कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अनवेरिफाइड डेटा मैं नहीं फॉलो करूंगा। yesterday also one of my friend gave me, forwarded some I would say some information from chat gpt। क्या बोलते हैं उसको? चैट जीपीटी बोलते हैं। कल ही हमको पता चला कि ऐसा चैट जीपीटी भी होता है, ठीक है। because yesterday we were talking about the 3 nominated member, I told you, yes or no? But I accepted that I was able to find only one name, right, not other 2 names। बहुत कोशिश किया, नहीं मिला। पर वो मेरा दोस्त इतना एनर्जेटिक था, उन्होंने मेरा सहायता करने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए उन्होंने सहारा लिया चैट जीपीटी का, और 3 नाम बाहर निकल के आया। मेरा एक बार मन किया कि मैं सीधा फॉरवर्ड कर दूं, लेकिन मेरा वो आदत नहीं। तो मैंने बोला इज इट वेरीफाइड? उन्हें बोला कि सर ये चैट जीपीटी का रिजल्ट है। मैंने बोला माफ करो दोस्त, बिकॉज द अदर 2 नेम which was right, which was under the search result, I again verified, right, through Google search, and I found that those names are not correct, ठीक है। जो सिबो काई का मैंने नाम, जिनका मैंने नाम आपको बताया कल, उनके बारे में भी लिखा हुआ है सिंगपो को नहीं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे? आदिज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए बहुत सारा कंफ्यूजन है, और जहां कंफ्यूजन है आई विल नॉट एक्ट एज एन ऑथोरिटी, राइट, unless until it is 100% verified, I'm not going to share any information with you, clear? It's always better to know nothing rather than knowing wrong things, yes or no? ठीक है। तो अच्छा है, आपने कोशिश किया, आई एम वेरी थैंकफुल, राइट। तो बाद में मैंने फिर पूछा कि ये चैट जीपीटी होता क्या है, हाँ। तो पता चला कि ये वो सर्च इंजन है जो सारा सर्च इंजन में जिसने भी जो भी अपलोड किया है वो उसको डाउनलोड करके भेज देता है, मतलब समरी ना। तो अपलोड अगर मान लो मैंने गलत अपलोड ही कर दिया है तो डाउनलोड भी तो गलत ही होगा ना। अरे यस और नो? तो वेरीफाइड सोर्स को देखना है, इधर उधर दिमाग नहीं लगाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2-4 क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो क्या, हाँ, मरने वाले तो नहीं है ना। यू हैव टू सिक्योर ओनली 60-65, राइट, 60-65% मार्क्स, ठीक है। डोंट गेट बॉदर्ड बाय दोस 5% स्पेशल यूनिक, राइट, अनवांटेड फैक्ट्स, यस और नो? तो थोड़ा ध्यान रखना, कंट्रोल यहीं पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। फाइन, सो दिस इज द ज्योग्राफिकल स्प्रेड वी हैव अंडरस्टूड। now coming to right coming to their coming to the total population, that is somewhere around 68,000, ठीक है। मतलब मैंने एग्जैक्ट फिगर आपको दिया 67,689, ठीक है ना। हाँ, देखिए यही बात है ना, मतलब आपको कैसे गलत याद रहा, ठीक है ना। चलिए अच्छा है। तो मतलब मैंने बोला रफली 68, राइट, 68,000 का पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है। किसी को अपना पॉपुलेशन फिगर पे अगर डाउट हो, राइट, बिकॉज यू बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स, यस नो, तो आप ये मत बोल देना कि क्या बात कर रहे हो सर, हम लोग का पॉपुलेशन इतना ही है क्या, ठीक है ना। ना, तो ये सब काउंटर और इसका कोई उपाय नहीं है। मेरा वेरीफाइड डेटा है और उसको आप जहां चाहो चेक करो, आप बोलेंगे तो एक्सेल सीट भी भेज दूंगा, ठीक है, राइट। वो मेरा नहीं है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटा, राइट, ठीक है। तो दिस इज योर टोटल पॉपुलेशन, यू नो द ज्योग्राफिकल स्प्रेड नाउ, ओके। दैट मीन्स 2 things, territory, right, and second is population, we know this, right? Coming to the third point, what is that? Socio-political institution or the socio-political structure, right, followed by adis, right, in the form of kebang, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज ए केबांग। केबांग है क्या? है क्या? अरे केबांग, राइट, इन सिंपल टर्म इट इज ए विलेज असेंबली,
right? It is a village assembly, and it can have two kinds, right? Two kinds. The assembly will have a change composition, ठीक है? The assembly will have different right, different kinds of functionaries. Okay, that means मैंने क्या बोला, केबांग क्या है? An assembly of villagers, right? Okay, now this assembly may have a different composition depending upon the mandate, depending upon the issue where, right, the issue they are tackling, right? And that takes to the division among the kabang, that is your social kabang and जुडिशियल केबांग, ठीक है? जब सोशल केबांग होगा तो क्या होगा? ऑल द विलेजर्स विल पार्टिसिपेट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कंपोजिशन चेंज हो जा रहा है, ठीक है? व्हेन वी हैव सोशल केबांग, व्हाई वी हैव सोशल केबांग? सोशल केबांग, राइट, सोशल केबांग हैव, राइट, हैव a responsibility towards, right, towards developmental issues, right? Okay, developmental issue, जैसे मान लो cleanliness है, right? Yes or no? Say those, right, those I would say economic activity, cultural activities, right? Right, community hunting, ठीक है? ये सारे कुछ होगा, फिशिंग, है ना? तो इसमें कौन काम करेंगे? सोशल के बाद, राइट? ओके, they would be, right, they would be dealing with only developmental matters, right? तो यहाँ पे क्या होगा? All the villagers will participate. That means the kebang here is an assembly of all the villagers, right? Whereas judicial kebang, in the judicial kebang, who will participate? That means judicial का मतलब क्या हुआ? When you have a dispute between, right, between two person, maybe you have a dispute between, right, between two person belonging to two different villages. That is also possibility, right? And that is also possible, na? So in that case, you will have judicial kebang, right? Judicial kebang has a, right, has a duty of adjudication, ठीक है? Arbitration. It has a duty of mediation. It has a duty of क्या? It has a duty of conciliation. इसका काम है dispute को resolve करना, ठीक है? तो judicial kebang, right? In this case, what will happen? The kebang composition will change, and here all the villagers will not participate. Whenever we have such dispute taken up by kebang, all the villagers will not participate. Who is going to participate? Only the gaon budas, gaon budis. Yes or no? Right? ठीक है? And क्या? और कौन? Obviously, the parties to dispute. बात समझ में आ रहा है? तो now the composition has changed here. Why? Because it is, right, it is a matter of adjudication, right? It is an alternate, right, alternate what? Alternate dispute, right, dispute redressal mechanism, right? Dispute को redress, जैसे आज के डेट में लोक अदालत होता है, मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, यू मस्ट बी नोइंग, राइट? इस तरह से ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है जहां पे अब क्या होगा? जुडिशियल मैटर्स, मतलब कोई डिस्प्यूट हो, सिविल, क्रिमिनल, राइट, दैट वुड बी टेकन अप, राइट? एंड हियर, right, here the kebang would consist of only, right, only what? Only the gaon budas or gaon budis, right, would be acting as the judge, ठीक है? ठीक है, उनका काम क्या है? उनका काम है केबांग को कॉन्स्टिट्यूट करना, कॉलिंग द केबांग, यस, right, and what? And supervising the, right, the procedure, the proceeding in the kebang, ठीक है? Where both the parties would be given equal opportunity to represent their case, ठीक है? बराबर सुना जाएगा. इसलिए क्या बोलते हैं? The principle of natural justice is, right, is clearly visible in the functioning of judicial kebang, ठीक है? And what is that? You all know the principle of natural justice. क्या क्या है? अरे no one should be punished without being heard, or the alteram partem बोलते हैं ना? Yes or no? ठीक है? अरे yes or no? No one should be the judge of his, right, judge of his own cause, ठीक है? Not to be a biased, right, biased judge. जो जज है वो biased नहीं होना चाहिए. मतलब यहाँ पे गांव बूढ़ा और गांव बूढ़ी जो है वो क्या करेंगे? They will not participate in discussion or arguments, right? No, they will just listen to the argument. तुम दोनों बोलो क्या प्रॉब्लम है, हम सुनेंगे. और accordingly, according to
the convention, customary laws, right? According to the tradition followed among the Adis, which is now documented in where? क्या बोलते हैं उसको? AKA, आदि केबांग आयोन, ठीक है, which is a written document now of customary laws followed among the Adis, right? रिसेंटली मैंने उसमें बहुत सारा अपडेट भी दिया आपको, ठीक है. Regular awareness campaign is being conducted by Adis. That means by uh, uh, I said by आदि बने कबांग, ठीक है, जिनका काम है अवेयरनेस लाना, ठीक है, among the Adis to ensure that there is uniformity in the application of those customary laws, right? There is uniformity in saying, in dealing with the judicial matter, the procedure, the proceeding, yes or no, all those things should be uniform across, across what, across the tribe, because there are many sub ethnic group within the Adi tribe, ठीक है, बहुत सारे हैं, है ना. अरे आदि में बहुत सारे क्या है, सब ट्राइब्स भी हैं, ठीक है ना, और सबका कुछ कुछ अलग प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है. तो दिस AKA is a constitution among the Adi tribe, which was drafted in 2012, and finally it was formalized in the year 2014, right? Amended only once in 2017. अभी तक केवल एक बार अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, राइट. और हमेशा अवेयरनेस कैंपेन चलता रहता है, ठीक है. रिसेंटली that was started in a month long awareness campaign was launched by Adis to to popularize, to disseminate the I would say the customary laws which has to be followed uniformly among the tribes while dealing with judicial matters or while dealing with the dispute, ठीक है, ठीक है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया उनका, उसका मैंने कवर पेज दिया आपको मटेरियल में, ठीक है. अरे यस और नो, अच्छा लग रहा देख के, ठीक है. वो कवर पेज है, बस उस कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने आपको कवर पेज दे दिया, ठीक है. तो AKA क्या है आप समझ गए, ठीक है. आदि के बांग आयोन, राइट. which is a documentation of what, which is a documentation of all customary laws, right, traditions, conventions, ठीक है, which has to be uniformly followed by Adis, across the state, ठीक है. यही इनका मोटो है. Is this point clear? ठीक है, फाइन. तो अब हम लोग ने क्या समझ लिया कि this is your kebang, right? How the composition of kebang changes, how the function changes, yes or no? So let us deal with the next part, and that is your kya? That is your political structure, right? That means the structuring of of the judicial kebang, not the social kebang, ठीक है. आप समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चरिंग किसका देखेंगे हम लोग? जुडिशियल केबांग का. इनका क्या काम है? एडजुडिकेशन का, ठीक है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, है ना, ठीक है. तो स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे फिर? when you see the structure you find those kebang right from the family level, और उसको क्या बोलते हैं? दुसुन, then
किसको वासी आ रहा है? बोरिंग लग रहा है? बोरिंग? लाइफ में सबसे बोरिंग काम क्या है? यार देखो, ऐसा जजमेंटल कमेंट नहीं देना है कि सरदुक्पेंस एंड अपतानीज आर द मोस्ट एजुकेटेड ट्राइब इन आवर स्टेट। ये सब छोड़ दो यार, बाद में देखा जाएगा। ठीक है ना? मैंने तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है ना। दिया है? अरे, रिकॉर्डिंग है भाई। हाँ, आप आदि बने क्रमांक के बारे में पूछ रहे हो, आएंगे उसके ऊपर। अभी पहले मैंने जुडिशियल विंग का दिखा दिया ना। तो हाईएस्ट जो एपेलेट अथॉरिटी है, इफ यू हैव ए डिस्प्यूट, राइट, दैट स्टार्ट फ्रॉम वेयर? फैमिली लेवल। ठीक है? फैमिली लेवल पे अगर डिस्प्यूट है तो क्या होने वाला है? राइट, एज फार एज पॉसिबल द डिस्प्यूट वुड बी रिजॉल्व विद इन द फैमिली, राइट, wheresoever, right, where the, I said, where the elders can participate, right, from the neighborhood. Okay, and they can, right, they can supervise the proceeding of the kebang, and the dispute may be resolved. So that helps in, right, that helps in preserving your, right, your family dignity. ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? तो as far as possible, right, the, I said, the issues related to marriage, adultery ना, ये सब जो केसेस होते हैं, ठीक है, इनको आपको कहाँ रिजॉल्व कर लेना है? फैमिली लेवल पे। अगर नहीं हो पाया, देन दैट वुड बी रेफर टू दोलुम के बाद, राइट? ठीक है? इफ दैट इज, राइट, इफ दैट इज नॉट रिजॉल्व, देन दैट वुड बी रेफर टू दोलुम के बाद। एंड हियर द विलेज काउंसिल वुड बी, राइट, वुड बी व्हाट? द विलेज काउंसिल वुड बी कॉल्ड, राइट? दैट मीन्स एक जुडिशियल केबांग वुड बी हेल्ड हियर। दैट केबांग इज दोलुम केबांग, which has two function। दोनों विंग है इसका। कौन कौन सा? डेवलपमेंटल as well as judicial, right? We are talking about the judicial. If you have an issue here not resolved at family level, that would be referred to dolung, right, dolung ke bang at village level. And here the gaon buddhas, right, the gaon buddhas or sure, right, or the gaon buddhis, they will, right, they will participate, right, and they will try to resolve it, right? If the dispute falls within the jurisdiction of the village, अगर village के अंदर ही हुआ है, ठीक है ना, तो obviously, right, obviously the, right, the head gaon buddha, right, of that particular village would be, right, would be acting as judge, right, and right, and that would be, you know, that means the kebang proceeding would be carried out। ठीक है ना? जिसको हम लोग जनरली क्या होता है कि जो ये दोलुम के बांग होते हैं, ये दोनों काम करते हैं। सोशल फंक्शन भी है और जुडिशियल फंक्शन भी है। ठीक है? तो यहाँ पे विलेज लेवल का हो गया। ठीक है? एंड देन, राइट, देन मे बी सम टाइम you have a dispute which is between two village, right, two village. Then in that case what will happen? Obviously, right, dolung ke bang won't be competent to deal with such issue, so that would be referred to bango ke bang। ठीक है? Right, block level, that means a group of villages, right? In a block will have group of villages. Are yes or no? You'll have group of villages and there is dispute between maybe two village, right? So in that case that would be resolved by, that would be taken up by बांगो के बांग, राइट? और यहाँ पे जो एकेए है वो क्या कहता है? वो बोलते हैं एटलीस्ट 10 गांव बुढ़ास। ठीक है? 10 गांव बुढ़ा होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है? टू, राइट, टू कॉल द केबांग and to carry out the proceeding, right? It will have president, right, vice president, secretary, ये सब भी होते हैं यहाँ पे। But they do not, right, they do not, I said, they do not act as judge। जज नहीं होते। जज कौन होते हैं? कौन? गांव बुढ़ास, राइट? एंड अमॉन्ग दोस गांव बुढ़ास वन हेड गांव बुढ़ा वुड बी क्या? would be elected and he would be acting as judge of the kebang, right? Okay, so this is how those inter village disputes are settled
बाय बांगो के बांग, ठीक है। अब उससे भी ऊपर मान लो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है, देन राइट, या फिर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया बट वन ऑफ द पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, ओके, देन इन दैट केस यू कैन अपील, वेयर you can appeal to the highest judicial body, right, highest judicial body among the adis, right, that is your BBK, right, bogung bekang, right, bokang ke bang, which is the highest appellate forum, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो this is how the right the judicial remedies are right you know are given, or I would say the political justice is given by the Kebang system among the adis, ठीक है। अब यहां से मान लो आपने बांगो केबांग का कोई जजमेंट आया, आपको ट्रस्ट नहीं है अपना इंडिजिनियस काउंसिल पे, यू आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड द मॉडर्न इंस्टीट्यूशन ऑफ राइट जस्टिस डिलीवरी, देन यू अप्रोच, क्या कर सकते हैं, यू कैन गो टू डेप्यूटी कमिश्नर, राइट, for the petty issue, maybe land dispute, right, and then right, then whatever judgment has been given by BBK, right, that is also not final, that can be appealed in the regular court, right, BBK से ऊपर अब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, राइट, सेशन कोर्ट, राइट, अगर क्रिमिनल मैटर है तो, सिविल मैटर है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यस, एंड फाइनली दैट कैन गो अप टू द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ जुडिशरी, द हाईएस्ट राइट, हाईएस्ट व्हाट, द हाईएस्ट लेवल ऑफ राइट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, दैट इज अप टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चला जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक, ठीक है। इस तरह से इनका जुडिशियल फंक्शनिंग होता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, अरे यस और नो, ठीक है। आप ये टर्म याद करने में प्रॉब्लम है टर्म के वजह से, तो फिर अरे जब मैं याद कर सकता हूँ बूढ़ा हो गया, तो आप लोग क्यों नहीं याद कर सकते। हाँ, मिथुन मीट खाओ, पेप्सी पियो, जो करना करो, आपुंग पियो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हेलीकॉप्टर में याद करो, रोड पे चलते टेम्पो में याद करो, जहां याद करना करो, पर याद कर डालो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। हो सकता है यहाँ से एक टर्म उठा लिया जाए और पीटी में ही पूछ लिया जाए, BBK is the wing that deals with the social and developmental issue among the adis, right, एक स्टेटमेंट आ गया और आप बोले करेक्ट है, इनकरेक्ट है, यस और नो, अरे मतलब चांसेस का बात कर रहा हूँ मेरे भाई, अभी ये आएगा कि नहीं आएगा उसका बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ संभावनाओं को आप टाल नहीं सकते, ठीक है, राइट, दीज आर द पॉसिबिलिटीज, राइट, सो प्लीज थिंक ओवर दैट ना, क्लियर। और अभी आपको सुनना है, केवल सुनना है, ठीक है, और आपने, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि समय का बहुत अभाव है ना, बहुत कमी होता है आप लोगों के पास, तो आप लोगों ने एक रीडिंग भी नहीं किया होगा बिफोर यू, राइट, नहीं किया होगा ना, समय नहीं मिला, वही मैं बोल रहा हूँ, समय का अभाव है आप लोग के जीवन में, है ना। जैसे कि मुझे एक दिन में 48 घंटे मिलते हैं और आपको एक दिन में केवल 24 घंटे मिल पाते हैं, ठीक है, राइट, आपको जो है मदर अर्थ आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है ना। हाँ, मेरे लिए अर्थ का रोटेशन 48 घंटा में पूरा होता है और आपके लिए 24 घंटे में, है ना, है कि नहीं, आपके लिए हर दिन दिन रात आता है, मेरे लिए दिन ही दिन होता है। जैसे कि मैं पोलर एरियाज में, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा समझना है, सबके पास इतना ही टाइम है, 24 घंटा ही है, ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद आप कुछ भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट, सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको कोई पूछा जाएगा, भाई बताइए आप कैसे सिलेक्ट हो गए, बताइए क्या किया आपने, बोला बहुत मेहनत किया, बहुत, हाँ, कभी कभी तो मैं पागल की तरह मेहनत करता था, 32-33 घंटा पढ़ना पड़ता था एक दिन में ना, और आप बोलेंगे यस क्लैपिंग, चलो सब लोग क्लैपिंग करो और सब लोग डायरी में लिख भी लो, 32-33 घंटा, 32-33 आवर्स एवरी डे, अदरवाइज विल नॉट बी गेटिंग सेलेक्टेड, हाँ। और जब फिर रोटेशन पढ़ने लगे तब याद आया कि एक दिन तो 24 घंटा का ही हो, क्योंकि उस समय दिमाग सिलेक्शन के बाद रोटेट हो जाता है, हाँ, है ना, पावर दिमाग में घुसने लग जाता है, ठीक है ना, बट दैट इज नॉट योर पावर, यू आर जस्ट ए पब्लिक सर्वेंट, राइट, डोंट फॉरगेट दैट, यू आर पीपल सर्वेंट, राइट, अरे मालूम है ना क्या, पब्लिक सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन, और आप क्या बनते हैं, पब्लिक सर्वेंट, हाँ, भूलना नहीं है, सर्वेंट, यू आर सर्वेंट, सर्वेंट, जब तक ये याद रहेगा, you would be right, you would be a person of integrity, you will always remain right, wise and sensitive, right, पावर दिमाग में घुसा, मालूम है फिर क्या होने वाला, you would be acting as a king, right, ना,
तो दैट इज व्हाट राइट, दैट इज व्हाट मतलब ये ऐसे ही बस बोल दिया मैंने, फ्रस्ट्रेशन में बोल दिया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट राइट, क्योंकि आपको तो अल्टीमेटली तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यस और नो, यू आर नॉट ए किड नाउ, है ना, आप तो बड़े मतलब मेच्योर हो चुके हैं ना, और आप लोग का पहले प्लानिंग तो हो ही गया होगा क्या करना है हमको, है कि नहीं। तो उसी के हिसाब से चलना है, पर याद रखना है कि दैट प्लानिंग शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल प्लानिंग, राइट। सो दिस इज योर राइट, दिस इज योर द फंक्शनिंग अमॉन्ग द जुडिशियल के बाद, ठीक है। अब आते हैं जो इन्होंने सवाल उठाया, वो क्या था, ए बी के, ठीक है, आदि बाने के बांग, राइट, दैट इज द एपेक्स बॉडी अमंग द आदिज, राइट, एपेक्स बॉडी which is also sometime called as Adi's parliament, क्या बोलते हैं, Adi's parliament, right, apex body among the Adis, and that deals with what, that deals with क्या, social issues, inter tribal issues, welfare of whole Adi tribe, तो कह सकते हैं आप कि बीबी के क्या है, बीबी के क्या है, एंड मैंने क्या बोला, बीबी के क्या है, हाईएस्ट अपलेट, राइट, अपलेट फोरम ना, ठीक है, यहाँ पे आपका डिस्प्यूट को आप अपील कर सकते हो, हाईएस्ट, राइट, विद इन द इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस अमॉन्ग द आदिस, राइट, विद इन द केबांग ना, ठीक है। अब एबीके क्या है, एबीके राइट इज द सुप्रीम बॉडी, राइट, दैट राइट, दैट मीट्स ऑकेजनली, कभी कभी मिलते हैं, राइट, it has a duty to, right, it has a duty to ensure, right, ensure the preservation, right, conservation, and right, and right, and following of those customary laws in the functioning of kebang. That means all the kebang must follow the customary laws, conventions, right, which have been documented in AKA. AKA क्या है, आदि केबांग आयोन, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को फॉलो कराना, ठीक है। मतलब एक इस तरह से समझ लीजिए, मतलब इस तरह से समझ लीजिए कि एबी के जो है वो क्या है, प्रोटेक्टर, राइट, प्रिजर्वर, कंजर्वर, राइट, ओके, द एपेक्स बॉडी टू, राइट, टू टेक कॉल फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर आदि ट्राइब विद इन अरुणाचल प्रदेश, राइट, if there is, right, if there is any such occasion of making representation to the state government, right, then who is going to represent, not BBK but, बात समझ में आ रहा है, ABK, ठीक है, any decision with regard to the welfare of entire Adi tribe taken by क्या, welfare, अरे डेवलपमेंटल फंक्शन है ना, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जुडिशियल फंक्शन, राइट, द हाईएस्ट सुप्रीम जुडिशियल बॉडी इज BBK, right, the highest supreme, right, supreme developmental body, social body, right, is ABK, ठीक है, मतलब ABK and BBK both are what,
दे आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, राइट। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, आप बोलेंगे मैंने गलती से लिख दिया होगा, नहीं, टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, मिरर इमेज, इसलिए मैंने क्या लिखा, नॉट ए बी के, मैंने लिखा के बी ए, उल्टा। अब ये टू डायमेंशनल सरफेस, आई कैन नॉट शो यू ए थ्री डायमेंशनल फिगर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अरे यस और ओ मेरे भाई, इसको कंफ्यूजन हो रहा है लगता है, छोड़ो हटा ही देता हूँ, मेरा क्रिएटिविटी काम नहीं किया। ठीक है, टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, ओके, समझ गए ना, मिरर इमेज है, ठीक है, दोनों एक दूसरे का, एक का काम सोशल फंक्शंस, दूसरा का काम जुडिशियल फंक्शन, बस समझ गए। ठीक है, तो दिस इज, अब जैसे मान लो इंटर ट्राइबल डिस्प्यूट है, ठीक है ना, यू हैव ए डिस्प्यूट बिटवीन Adis and other tribes, then who is going to, right, who is going to take the lead, who is going to negotiate, who is going to mediate? ABK, आदि बाने के बान, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो हम लोगों ने अब फोर्थ पिलर भी देख लिया, वो क्या है, क्या, इंटर ट्राइबल रिलेशनशिप, राइट, एंड दैट इज गवर्न्ड, दैट इज एडमिनिस्टर्ड, राइट, दैट कॉल इज टेकन बाय ABK, है ना, clear? So these are the things you should, right, you should keep in mind. Apart from that, you can say, right, you can deal with other things like, right, like functions, ठीक है, functions में क्या क्या, मैंने आपको पहले बताया क्या क्या function है, administrative function, right, ठीक है, maintenance of peace, right, developmental functions, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक फंक्शंस, जैसे मान लो फेस्टिवल है, सेलिब्रेशन है, ठीक है, तो उसका डेट को कौन फिक्स करेगा, ठीक है, उसका वेन्यू को कौन फिक्स करेगा, है ना, ये सारा काम उनका है, के बांग का, ठीक है, वो करेंगे। क्लीनिनेस, कम्युनिटी हंटिंग, फिशिंग, ठीक है, राइट, दिस ऑल कॉल वुड बी टेकन बाय, राइट, टेकन बाय केबांग, ठीक है। अगर विलेज लेवल पे है, ठीक है, मान लो विलेज लेवल पे है, तो ऑब्वियसली दैट वुड बी, अरे दैट वुड बी दोलुम केबांग, इसलिए मैंने बोला कि दोलुम केबांग इज द मोस्ट इफेक्टिव केबांग, राइट, केबांग क्या, ऑफ केबांग, दैट मींस ऑफ that means the system of governance, right, among the right, among the adis, because, right, because that deals with both, right, both developmental as well as judicial functions, ठीक है, clear? Yes, fine. Now coming to the challenges में क्या क्या है, challenges में क्या क्या है, देखो एक बात याद रखना और भी, जैसे हम लोगों ने बोला कि दीज आर योर फंक्शंस लाइक सोशो इकोनॉमिक फंक्शन, रिलीजियस फंक्शंस ना, ठीक है, रिलीजियस फंक्शन, तो जैसे मान लो हम कोई डिस्प्यूट है ना, जनरली यहाँ पे देखा जाता है ब्लॉक लेवल पे, अगर दो विलेज के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है, या फिर दोलुंग के बांग कोई डिस्प्यूट को क्या कर रहा है, रिजॉल्व करना है, उनको एडजुडिकेट करना है, देन वेयर दैट प्रोसीडिंग वुड बी हेल्ड, कहां पे होगा, एक कम्युनिटी हॉल है जिसको हम लोग बोलते हैं डेरे और मासप, राइट, अमंग द आदि, ठीक है, और वहां मोसप, राइट, वेयर दैट इज हेल्ड, ठीक है। अगर कोई हीनियस क्राइम हो गया तो याद रखना है, मतलब ऐसे ही इंटरेस्टिंग बात है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, अगर कोई हीनियस क्राइम हो गया, देन केबांग वुड नॉट बी हेल्ड इन द कम्युनिटी हॉल, क्यों, ऐसा मानना है कि हीनियस क्राइम का जो एविल स्पिरिट है वो क्या करेगा, वो मोसप में चला जाएगा, डेरे में चला जाएगा, कम्युनिटी हॉल में आ जाएगा, एंड अल्टीमेटली दैट विल बिकम इम्प्योर, बात समझ में आ रहा है, मान लो मर्डर कर दिया, तो दैट केबांग वुड नॉट बी हेल्ड इन डेरे, DERE, ठीक है, कम्युनिटी हॉल में नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि उनका मानना है कि वो अपवित्र हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो दिस इज व्हाट वी हैव, राइट, वी हैव अमंग द आदिस। कमिंग टू द चैलेंजेस तो आपको मालूम ही है, ठीक है, नाउ यू हैव, राइट, गांव बुढ़ास ना, they are right, they are no, the panchayat members, right, the village head, they have become more and more influential, right, you have MLAs, right, they are more influential now, right, ठीक है, so ultimately, right, what is happening, these indigenous institutions, they are right, they are facing a direct, right, a direct threat
because of the curtailment in their developmental function, curtailment in their judicial function, right? And now they only deal with some petty issues, right? Petty social and judicial issues, छोटे मोटे जो dispute होंगे उसका resolution कर लेते हैं. But in the longer run, in the longer से longer, or I would say in the larger social perspective, if you follow those, right, those indigenous institutions in Arunachal Pradesh, you'll find that they are catalyst, right? They are very significant in maintenance of kya? Maintenance of peace, right? Harmony and law and order, right? Within the village and between the villages, right? So they act as assistant to the general administration, right? Whenever we have some situation of, or whenever we have some volatile situation, these indigenous councils can be very handy in saying, right, in bringing situation under the control. ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिफंक्ट हो गए, ठीक है? They still are revered, they still are, right, are respected. Okay, so that's why, right, that's why in emergency situation, these bodies, uh, these bodies play a critical role in saying diffusing those crisis situation and maintaining peace and order, right, within the villages or within a particular territory. ठीक है? क्लियर? यही बात आपको लिखना है, ठीक है? यही बात आपको लिखना है, क्योंकि आपको रेलेवेंस तो बताना पड़ेगा ना, व्हाट रेलेवेंस यू हैव, ठीक है? अगर वो थ्रेट है, चैलेंजेस मैंने बोला, ठीक है? They are facing challenges, no doubt, right? Maybe after 20-30 years, if you go for further assessment, right, after 20-30 years, the situation would be completely different, right? Yes or no? You have what? You have, I would say, you have surface, right, or surficial penetration of modern institution in Arunachal Pradesh, right? That has not reached up to all the villages, right? That has not reached up to all the space within the state. ना नहीं हुआ है. So धीरे धीरे after 10 years, 20 years, what will happen? Obviously the situation will change, right? With further penetration of what? Penetration of modern institution in far-flung area of Arunachal Pradesh, obviously the village council would be, right, would be facing further threat and they would be on decline. Yes or no? ये तो बस इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, राइट? कि आप अभी ये हालत है, अभी ये धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उनका ऑथोरिटी कम हो रहा है, तो आगे चल के भी ये प्रॉब्लम हो. बट डोंट फॉरगेट द सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यस और नो, right? The sense of ancestry, the sense of customary law, the sense of, right, the sense of belongingness among, right, among a particular community. We are talking about Adis here, so obviously, right, that always remains supreme among them, because, right, because they have, right, they have documented it now. ठीक है? पहले क्या होता था? Generation after generation it was passed on through, right, through those ballads, rhapsodies, right? Ballads समझते हैं ना? Poetry, matlab wherever, I mean a poetry, right, where you have a poetry of, right, or a poetry with a style of storytelling. ठीक है? बताया जाता कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, ठीक है? वो ये करते थे, इतने ताकतवर थे, ठीक है ना? हाँ, नदी को पैदल चल के ही क्रॉस कर जाते थे, कुछ भी बोल सकते हैं ना? अरे बोलने को बोलेंगे ना, ऑब्वियसली हमेशा हम अपने एंसेस्टर्स को अच्छा ही बोलेंगे ना, ठीक है? तो उसमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी आ ही जाता है, ठीक है? सुपरफिशियल, है ना? तो ये हम ध्यान रखना है कि these institutions no doubt are under the threat, right? No doubt, but still they are relevant. What are the point of relevance? You just highlight that, ठीक है? Political, right, their contribution in maintaining law and order, peace, harmony, ना, ये सारा बात कर लेना, 5-6 पॉइंट खत्म, ठीक है? जस्ट वन कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ओवर, क्लियर? ठीक है? चलिए, तो दिस इज अबाउट दोस्त जो कोई कोई खाली करंट अफेयर पढ़ के ऑफिसर बन गया ना, तो उनको अपना रोल मॉडल मत बनाइएगा, ठीक है? कुछ दोस्त लोग हैं जो बोल रहे हैं कि कोई कोई ऑफिसर करंट अफेयर खाली पढ़ के बन गया.
तो उनको अपना रोल मॉडल मत बनाइए ना, तो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसा ना रहे, ऐसा ना हो कि आपने करंट अफेयर पढ़ने के चक्कर में आप खुद हिस्ट्री बन गए, ठीक है ना। हाँ, आपको हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि एक आदमी था जो कभी प्रिपरेशन किया करता था, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हो पाया उसका, ठीक है। तो स्टोरीज पे नहीं जाना है, सब गॉसिप और रूमर्स पे नहीं जाना है, जस्ट जस्ट फॉलो द राइट, फॉलो द कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ प्रिपरेशन जो हम लोगों ने सिलेबस को देखा है ना। चलिए, तो अभी हमारा now coming to just 2 minute discussion or general points related to the Galo tribe, okay, because after that we'll deal with ठीक है। So we are dealing with the democratic institution, right? Coming to the Galo tribe, I just told you that you have a democratic, right, a democratic nature of functioning among the Galo tribe and San, right, and they carry out the discussion, right, discussion with respect to the judicial matter or developmental, right, developmental issue at length and breadth, right, at length and breadth they all participate, right, and they carry out a discussion, and finally after long period of deliberation they come to a decision, and then those decisions are are applied, executed, right, in judicial as well as your क्या as well as your social matters, right. तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो जो गालोज हैं उनमें भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, वो उनका जो इंस्टीट्यूशन जो फॉलो करते हैं दे आर डेमोक्रेटिक इन नेचर एंड the decisions are not the decisions are not taken in a arbitrary manner, right. All the parties to the dispute are given again same बात करना है, ठीक है, right, same thing, right, that means the principle of natural justice, right, given every chance, बस यही है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कस्टमरी लॉज का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, पर आदिज में क्या हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ठीक है। दिस वन मोर डिफरेंस यूल फाइंड, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। you'll find some tribes are having more advanced, I would say advanced system of governance, right, but that system of governance is not documented, right. So this is one problem here, that means in want of documentation, some of those I would say that the real functioning of those institutions are not properly understood. So that is why I'm making a brief summary of this, ठीक है ना, मोर लेस सब जनरल पॉइंट वैसा ही रहे, ठीक है, क्लियर, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में होता है जैसे डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होता है, राइट। तो बीट योर डेवलपमेंटल फंक्शन, डेवलपमेंटल इश्यूज, राइट, द इशू रिलेटेड टू फेंसिंग, फिशिंग, कम्युनिटी हंटिंग, ये सब जितना कुछ आएगा, ठीक है, सब में कैसे डिसीजन होगा मालूम है, ठीक है। डिसीजन वुड बी टेकन by all the people, right, that means all the villagers together, okay, is this point clear? तो दिस इज हाउ, और अब तो मालूम है कि धीरे धीरे यू हैव द इंस्टीट्यूशन ऑफ गांव बुढ़ास, राइट, गांव बुढ़ीज, these institutions are becoming more and more popular, more and more accepted now, and those judicial matters are adjudicated by those गांव बुढ़ास, ठीक है। रेड कोड तो पता होगा, रेड कोड दिया जाता है, नो, अरे यू मस्ट बी नोइंग गांव बुढ़ा, or you must have heard about ombudsman, right, ombudsman's scheme, ombudsman क्या होता है, ombudsman जो सबसे रिस्पेक्टेड आदमी होता है, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है, उनका इलेक्शन हो रहा है ना डेमोक्रेटिक वे में, ठीक है। पहले क्या होता था, लोग किसी किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी किसी काउंसिल में उनका इलेक्शन होता था, और किसी किसी में उनका क्या होता था, they were selected ना, मतलब by raising hand, ठीक है, ये आदमी, the person of intellect,
the person having wisdom, the person who is a man of integrity, right? ठीक है, so that person would be chosen as the village head. ठीक है, so this is what we have under the gallows. Now coming to the next one, that is Mompas, right? Under Mompas we have a system that is called as the system Sorgan system. ठीक है, the Sorgan system of governance. ठीक है, बात समझ में आ रहा है? Sorgan है ना? तो पहले हम लोग को क्या देखना है, याद है ना? भूलना नहीं है, वही कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया है, इसमें क्या है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. ठीक है ना? तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में क्या क्या बात करेंगे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में क्या बात करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टॉक अबाउट, देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट इवेंट्स, राइट? थ्री इंपॉर्टेंट इवेंट्स. The first thing which you have to highlight is the governance model in this particular area, or sure among the Mompas, right? The governance model was aristocratic in nature. कैसा था? Aristocratic, right? That means the village chief used to be the descendant of a royal family, right? Of Prince Rupati, right? वो उनके descendant जो है वो उसके चीफ बनते थे. मतलब it was based on what? It was based on hereditary, right? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? With the arrival of Buddhism, क्या हुआ? The village councils were restructured. That means in 11th century, right? 11th century AD, और जिसको आजकल हम लोग कॉमन एरा CE बोलते हैं, है ना? तो 11th century, right? 11th century में क्या हुआ? With the coming of Buddhism in this particular belt, what happened? Slowly, gradually, the village councils were reconstituted into two wings, right? One was the secular wing, the other was the religious wing. ठीक है ना? Religious wing was headed by the monk, right, who became the de facto or the virtual administrator, right, at the district level, and they were called as, क्या बोलते थे उनको बोलते थे जोंग पोंग्स. डी साइलेंट है, जोंग पोंग्स, राइट? ठीक है, एंड द विलेज, राइट, I mean the whole district, right, district was called as Jong. ठीक है, डी साइलेंट. आप लोग मुझे ऐसे मत देखो यार. ठीक है, जो मॉन्क है वो क्या बन गए? जोंग पोंग्स. मतलब वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट हेड, राइट? ओके. और जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है? द डिस्ट्रिक्ट असेंबली, डिस्ट्रिक्ट लेवल असेंबली. क्या हो गया वो? जोंग. ठीक है ना? तो ये हम देखते हैं कब? 11th century, right? And a monk came here, he popularized Buddhism, and ultimately the indigenous council was restructured. ठीक है, is this point clear? Next major development, that is seen in the 16th century, right? 16th century AD, when we have expansion in the population of Mompas. ठीक है, मोम्पा का पॉपुलेशन बढ़ने लगा. दैट मीन द सेटलमेंट्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग, राइट? ओके, राइट. एंड with the increase in population, what happened? Now the settlements, right, some of the settlements which were smaller, they became bigger, बड़े बन गए. ठीक है, तो जो स्मॉलर सेटलमेंट थे, दो स्मॉलर सेटलमेंट्स वेर हेडेड बाय सोबेल्स. क्या बोलते थे? सोबेल्स. टी साइलेंट. कंफ्यूजन, तकलीफ? अरे यार, ठीक है ना? वो क्या बन गए? स्मॉलर सेटलमेंट. ठीक है, सोबले, या मतलब सोबले कह सकते हो उसको, सोबले, राइट? स्मॉलर सेटलमेंट. और जो बड़े सेटलमेंट थे वो क्या हो गया? मतलब द बिगर विलेजेस, दे वर हेडेड बाय क्या? दे वर हेडेड बाय सॉर्गन. मतलब स्मॉल सेटलमेंट और बड़े सेटलमेंट को कौन हेड कर रहा है? सॉर्गन, राइट? विलेज हेड, बिगर सेटलमेंट्स.
and there are many, right, maybe there are many, right, many big and small villages within a district, right, within a district, and the district head would be who? कौन होंगे? हम लोगों ने बात किया है, right? The monk became the head of the administration at the district level, right? ठीक है, जोंग पॉन्स. अब आता है जो नेक्स्ट मेजर डेवलपमेंट, वो क्या है? दैट नेक्स्ट मेजर डेवलपमेंट वी सी इन, राइट, इन द ईयर 1950. ठीक है, हाँ, नहीं, जोंगपोंग्स जो हो गए विलेज हेड हो गए, मतलब सॉरी, डिस्ट्रिक्ट हेड हो गए, राइट? ओके, एंड दैट काउंसिल वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? जोंग. ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दिस इज योर, देखो टर्मिनोलॉजीज में यार फिर वही है, मैंने याद किया, आपको भी याद करना पड़ेगा. ठीक है, सिंपल सा बात है. मैंने कोई ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसे ही बस एक बार देखा और मेरा फोटोजेनिक बस वही एक ही आदमी का होता है, हमारा नहीं है. ठीक है, जो आंखों से देख के ही सब कुछ डायरेक्ट मेमोरी में चला जाता है. मालूम है ना कौन आदमी है जिनका डायरेक्ट ऐसे सब कुछ एक बार ऐसे फाइल देखते सब याद आ जाता है मेमोरी में? फोटो, अरे हम लोग कैसे पढ़ते हैं? ऐसे ऐसे ना, लाइन बाय लाइन. और एक आदमी कैसे पढ़ते हैं? डायरेक्ट. फोटोजेनिक होता है. हमको मालूम नहीं, आपको मालूम है, आप नाम लीजिएगा, अंदर जाइए. ठीक है, मेरा नहीं है मतलब. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज योर, राइट, दिस इज योर, क्या मैं बोल रहा था यार, कहाँ चले गए हम लोग? ठीक है, तो स्मॉल सेटलमेंट्स वुड बी हेडेड बाय सोबले, राइट, एंड दोज बिगर सेटलमेंट्स, राइट, दोज बिगर सेटलमेंट्स वेर हेडेड बाय सॉर्गन्स. ठीक है, तो यहाँ से सॉर्गन का शुरुआत होता है. ठीक है, फिर मेजर डेवलपमेंट हम लोग क्या देखते हैं? 1950. ठीक है, इन 1950 व्हाट हैपेंड? In 1950 what happened? Tibet was annexed by People's Republic of China. ठीक है, 1951 में annexation हो गया. ठीक है, fall of Tibet led to what? Fall of Tibet and right and introduction. भूलना नहीं है कि 1947 में हम भी इंडिपेंडेंट हो गए. The country got independent, right, independence 1947. यार हम लोग का देश, हम लोग, अरे भाई बाहर निकलो यार, आपका सियांग, दिबांग, करा दादी वो देश नहीं है, देश है भारत. हाँ, तो हम लोग का देश आजाद हो गया 1947, राइट? एंड with fall of Tibet and introduction of regulation by government of India, what happened? The institution of Jongpons were given up. बात समझ में आ रहा है? That was given up because it is a theocratic institution, theocratic, religious based. ठीक है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेगुलेशन वो कैसा है? सेकुलर रेगुलेशन, राइट? सो इट वाज गिवन अप, छोड़ दिया गया. तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड? व्हाट वाज रिमेन? क्या बच गया? बच क्या गया? बच गया सॉर्गन. ठीक है, और सॉर्गन कहां पे? विलेज लेवल पे. देन यू विल हैव ग्रुप ऑफ विलेजेस, राइट? यू विल हैव अ ग्रुप ऑफ विलेजेस. Then you'll have the entire district having many villages. Yes, here. So that head was called as what? क्या नाम पड़ गया? सॉर्गन. कहां पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. ठीक है, कंफ्यूजिंग है क्या? इतना यार सिंपल तरीके से बता रहा हूं, फिर भी आपको कंफ्यूजिंग है, तो फिर कोई बात नहीं है. आई डोंट बिलीव इन रीबर्थ, यू बिलीव आई डोंट नो, राइट? ठीक है, एक ही जीवन है, इसी में आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है, तो दिस इज मैंने क्या बोला कि ये रिप्लेसमेंट हो गया, राइट? और बचा क्या फिर? अरे व्हाट वाज लेफ्ट? दैट वाज लेफ्ट एज सॉर्गन. दैट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नेंस, राइट, at the village level, right from the village level to the district level. The largest, right, larger जो पूरा डिस्ट्रिक्ट का हेड है उनको क्या बोलते थे? A village head would be called as sorgan. The district head would be called now as sorgan, right? Who would be elected by whom? By a general assembly, right? A general assembly made up of all the villages within the district, right? And that person would be elected as
सो सॉर्गन मतलब सॉर्गन का भी चीफ, उनके भी ऊपर, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और ये सुनो, and that right, and that assembly, right, the assembly at the district level was called as what? क्या बोलते थे उसको, क्या बोलते थे? सोबोला। हाँ, क्या स्पेलिंग है बताइए, गलत ना हो जाए हमसे। हाँ, TSOBLA, यही है ना? ठीक है। हाँ, वो वो इंस्टीट्यूशन नहीं है, हेड है, हेड, हेड ऑफ द स्मॉलर हैमलेट्स, स्मॉलर विलेजेस ना, ये असेंबली है सोबला, राइट, ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट पे हेड कर रहा है वो है सोस ऑर्गन। तो फिर विलेज लेवल पे जो काउंसिल है उसका क्या नाम है? दैट वाज कॉल्ड एज मांगमा, जोमसा, या सिंपल मांगमा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? द असेंबली ऑफ, राइट, असेंबली ऑफ विलेजर्स, राइट, द the indigenous council at village level was called as what? Mangma, right? The indigenous council at district level was called as what? अरे सॉरी सॉरी, सोपा, हाँ, ठीक है। इसका हेड कौन है? सॉर्गन। डिस्ट्रिक्ट लेवल का हेड कौन है? सो सॉर्गन। अब समझ में आया बात? डिफरेंस समझना है। दिस इज योर असेंबली, द नेम ऑफ द असेंबली दैट इज मैंगमा। असेंबली क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल इन a village, all the right, all the villagers, okay, so that is magma, right? Here here all the, right, all the population of the entire district within which we have many villages, right, and that is headed by source organ, ठीक है ना? तो यहाँ पे इलेक्शन होगा और यहाँ पे भी इलेक्शन हो गया, तो कैसा है इलेक्शन अगर हो रहा है तो कैसा इंस्टीट्यूशन हो जाएगा? डेमोक्रेटिक। तो यस और नो? Are you getting my point? So this is your, right, this is your institution we had, right, we had, and this is how the institution has evolved, right, evolved under the Monpas. Okay, coming to the geographical, right, geographical spread, क्या क्या याद रखना है geographical spread में? ठीक है, अब हम लोग तिब्बतन जो डॉक्यूमेंट देखते हैं उसमें क्या देखते हैं? मॉन पा। देयर आर टू वर्ड्स हियर, मैंने मटेरियल में सब कुछ लिख के दिया हुआ आपको। मॉन पा, मॉन मीन्स व्हाट? Mon means what? Mon means lower areas, right? Lower areas. Pa means people. That means people who live in the lower areas, or you can say the people who live in, right, live in the region to the south of Tibet. ठीक है? साउथ ऑफ तिब्बत, जो तिब्बत में रहते तो उनका क्या नाम पड़ गया? लो पा। लो मतलब अपर रीजन, मोन मीन्स लोअर रीजन, पा मीन्स पीपल। Is this point clear? Are yes or no? So this is how, right, this is how the name, right, name evolved, right? Clear? Now coming to the second point, right, their population कितना है? लगभग 43,000 के आसपास, ठीक है ना? 44 ले लो रफली, है ना? और उनका कंसंट्रेशन कहाँ है? वेर यू फाइंड मोम्पाज, राइट, मोम्पाज कंसंट्रेटेड और श्योर, राइट, और inhabiting the territory in say Arunachal Pradesh? दो ही डिस्ट्रिक्ट है ना? वन इज योर कंप्लीट तवांग डिस्ट्रिक्ट एंड द सेकंड वन इज योर वेस्ट कामेंग, राइट? स्पेशली टू सर्कल, वन इज योर दिरांग, द अदर इज कलक्तन, ठीक है? दो सर्कल है और यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन मिलेगा, राइट, ऑफ मोम्पास। क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो दिस इज द ज्योग्राफिकल स्प्रेड। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग आते हैं किस पे? देखो ये स्ट्रक्चरिंग करने के बाद थोड़ा आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? ठीक है, तो अब हम लोग को हमेशा याद रखना है वही स्ट्रक्चर, ठीक है? तो तीसरा पॉइंट क्या है? सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर,
of those indigenous councils. ठीक है, क्लियर? तो अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, व्हाट यू फाइंड हियर, व्हाट यू फाइंड हियर, द फर्स्ट थिंग देखो, स्मॉल विलेज, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना है, अब हम लोग पहले दो बात को, क्योंकि सॉर्गन के बारे में बात करें ना, तो पहले हमको इसको समझ लेना है, सौर एंड गन, दीज आर टू वर्ड्स। सौर मीन्स व्हाट? चीफ। गन मीन्स व्हाट? रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, राइट? दैट मीन्स द पर्सन हु हेड्स द विलेज or the person who heads the entire district, yes or no, is the chief, and he has the responsibility to carry out, kya, to carry out all those functions, right, assigned to the village council, right? ठीक है, सौर गन, सौर means chief, gun means responsibility, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो this is how, right, this is how we have, right, we have no, this is how the term, right, sorghum has evolved. Now coming to the small villages, जो छोटे विलेज होंगे उनका क्या होगा? They are headed by sobles, right, assisted by gumis, sorry, gomis, thumis, ठीक है, उनको असिस्ट करेंगे, ठीक है। these again these right, these officers, right, these officers are elected, right, elected by whom? Village council. Village council कौन है? मंगमा। अरे यस और नो, अरे यस और नो, बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ, देखो यहां भी दो वर्ड है, मैंगमा जोमसा, ठीक है, मैंगमा जोमसा। मैंगमा का मतलब क्या होता है? मैंगमा जोमसा, आप दोनों में से कोई वर्ड, मैंगमा खाली बोल सकते हो या फिर मैंगमा जोमसा, ठीक है ना? तो मैंगमा एंड जोमसा, तो मैंगमा मीन्स विलेज, जोमसा मीन्स असेंबली, राइट? ओके, so that is your magma or magma jomsa, assembly of people, right? So that is your, right, that is your name, how the name has evolved. Sobles जो है, they are independent, they can take all the decision, right? Okay, they would be supervised by larger villages headed by sorgan, group of those villages in a district will, right, will develop one council. That council would be called as what? Sopa. That would be headed by whom? सो सॉर्गन। देखो यहाँ नाम पे ध्यान रखना, सो मतलब मैंने क्या बोला था? सौर, सौर, सो सॉर्गन, है ना? चीफ का भी चीफ, ठीक है, बात समझ में आ गया? ये जो असेंबली है यहाँ पे, चाहे बड़ा विलेज हो चाहे छोटा हो, ये असेंबली का क्या नाम होगा? मैग्मा, right? This is how the political structure has, right, has evolved, right? The socio-political structure has evolved among the Mompas with respect to the villages, right? The villages, the village council, or sorry, you can say the indigenous, right? The indigenous council or traditional, right? Traditional council. Okay. ये बात समझ में आ रहा है ना? The socio-political structure, ठीक है? Clear? Now coming to some, right, some other right, other points here. More or less देखो सारा बात वही रहेगा, functions में हम लोग जाएंगे, ठीक है? When you talk about the functions, right, तो you have developmental function, ठीक है ना? इसमें developmental में क्या क्या काम है? Building, repair of road, right, water service ना, क्योंकि hilly areas याद रखना है, ठीक है? It is a tough terrain, yes or no? So these are right, these are your and one more thing, because of the because of the religious, right, or sure, because of the
I said because of the spirit, right? Because of the spiritual, right? Spiritual, I mean, spiritual ideology or spiritual following in this particular area, people are more or less contented. ठीक है? तो हंटिंग ना, बात समझ में आ रहा है? कम्युनिटी हंटिंग, ये सब का काम इतना ज्यादा नहीं होता, मेनली मेंटेनेंस का काम है, ठीक है? और रेवेन्यू सिस्टम है, राइट? when the Gumis, right, they would be acting as messenger, as well as they will also help in, right, in preparing accounts, right, accounts of revenue, and they would be presenting that to the sorgan, ठीक है ना? और चाहे तो सॉर्गन, चाहे तो किसी सोबले को, राइट, और या फिर किसी गुमी को, ठीक है, ऑथोरिटी दे सकते हैं, एंड दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर रिस्पेक्टिव विलेजेस, दे वुड बी टेकिंग ऑल द डिसीजंस, राइट? ओके, दैट कैन बी चैलेंज, दैट कैन बी क्रिटिसाइज, दैट कैन बी निगेटेड only by whom? Only by magma, right? That means your village council, right? So chief is not taking all the decision, right? Sorgan is, right, Sorgan is a person who is heading the assembly, right? But that person is elected person, right? The office is elected, okay, right? So he cannot, right, he cannot function, right, according to his whims and fancies, okay? It has to be based on democratic values, right? So that is why we have इसीलिए इसको बोलते हैं, देखो मैंने बोला इवोल्यूशन का देखना तरीका, तिब्बत 1950, राइट? तब तक क्या है, the system of local self government among Mompas is of what? Is of theocratic nature. Theocratic, right? Because that is assembly that is being headed by whom? That assembly is being headed by Jongpangs, right? Monks, ना? ठीक है? Theocratic, religious head है ना वो. तो ये कैसा हो गया? Theocratic. उससे पहले कैसा था? Aristocratic, right? और अब बचा क्या आफ्टर 1950? डेमोक्रेटिक. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि दिस इज हाउ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अमंग मोम्पास हैव इवॉल्व्ड. इट वाज नॉट द सेम, राइट, थ्रू एंसेस्ट्री or from the time immemorial, right? The institution has evolved, right, I said evolved through a long period of, I would say social changes, right? And ultimately now what is left is your institution of democratic principle, right? This is what we see, right, see in the sorghum, ठीक है? तो डेवलपमेंटल फंक्शन हो गया, जुडिशियल फंक्शन, ठीक है? वो लोग जुडिशियल फंक्शन भी करेंगे, कैसा? स्मॉल डिस्प्यूट्स, राइट, ठीक है? तो पहले कोशिश किया जाएगा कि अगर दो आदमी के बीच में अगर कुछ डिस्प्यूट है, तो यू हैव टू मीन एज फार एज पॉसिबल यू हैव टू सेटल दैट इन म्यूचुअल, राइट, इन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? And there is a provision of, I said there is a provision of compensation, ठीक है? compensation हम क्या बोलते हैं, compensation देते हैं, मतलब जो अग्रीव पार्टी है, ठीक है, उसको compensation देके कुछ उनको कैसा compensation, एक स्कार्फ दे सकते हैं, ठीक है, right? They are given a scarf, maybe some bottles of rice beer, ठीक है, and ultimately the issue is resolved. अगर वो resolve नहीं हुआ, right, at the level of individual, right, then that will come to where? That will come to magma, ठीक है? And now that would be decided by whom? Sorgan, ना? बात समझ में आ रहा है? अरे yes or no? This is how, right, the judicial functions are carried out. But वही है, याद रखना है कि the institution, ना, all the traditional village institutions are now facing the threat from, मालूम है, ठीक है? तो earlier sorghums, right, they didn't get any salary, right, है ना? It was a free service, social service, ठीक है? और उसके बदले में क्या होता था? The entire village, right, for one day will give their free labor, right, on the land which is being possessed by the sorghum. Because उनको तो टाइम दिया ना इतना, तो भाई उनको कंपनसेट कैसे किया जाएगा? सारे विलेज वाले जाएंगे उनके खेत में काम करके, आपने लेबर दिया, हमने भी लेबर दे दिया बराबर, ठीक है? अभी गांव बुढ़ास, राइट, the modern institutions, right, they are nominated as well as elected, ठीक है ना? और उस केस में फिर क्या होता है, right, that is different from sorghum ना? अभी
दे आर पेड ऑनरेरियम, ठीक है, उनको सैलरी मिलता है ना गांव बुढ़ा को, ठीक है, कैटेगरीज भी है, गांव बुढ़ा 1, गांव बुढ़ा 2, हेड गांव बुढ़ा ना, ठीक है, तो दे गेट द गेट सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, so that is different from the sorghum, ठीक है, so these are the differences you can find, and you can see the challenges, right, what threat we have to those, right, to those institution of, right, those institution of indigenous nature, or so, right, or the institution which function from time immemorial among, I mean, all the tribes, I would say, right. Here we are talking about Mompa, so you can understand the same thing, right. ठीक है, सेम प्रॉब्लम है, एडजुडिकेशन का मैटर है तो लोग कहाँ जा रहे हैं, कोर्ट पे चले जा रहे हैं, ठीक है ना, अगर किसी को कोई डिस्प्यूट है तो वो इंस्टेड ऑफ रेफरिंग टू मैंगमा, दे आर गोइंग टू गांव बुढ़ा, बिकॉज गांव बुढ़ाज आर नाउ enjoying more, right, more respect, right, they are enjoying more authority, ठीक है, वो तो गवर्नमेंट के एजेंट है ना, तो उनको तो मोर अथॉरिटी है, ठीक है, yes or no, nobody is, right, nobody is, I said nobody is approaching, right, is approaching magma, right, sorghum, and ultimately the institutions are on decline, ठीक है, धीरे धीरे सारे इंस्टीट्यूशन का, सबका मोरलेस, सबका, ठीक है, रीजन आपको पता है, जस्ट वही रिपीट करना है, 3-4 पॉइंट्स, राइट, तो दिस इज व्हाट वी सी, पर वही है, फिर से लास्ट पॉइंट वही, कि हाउ, राइट, हाउ दोज इंस्टीट्यूशंस आर स्टिल रेलेवेंट, दे आर रेलेवेंट इन द, right, in the crisis situation, they are relevant in maintaining, right, maintaining, I would say, peace and harmony, right, harmony within a territory, within a village, right, within a particular district, yes or no, why, because, right, because spiritually, right, spiritually, right, in context of their tradition and customs, right, the sorghums or magma still enjoy respect in the society, ठीक है, रेस्पेक्ट तो है, बट वही है, ऑथोरिटी कम हो गया, ठीक है, स्टिल दे एंजॉय द रिस्पेक्ट, पर ऑथोरिटी नहीं है, इज दिस पॉइंट क्लियर, बात समझ में आ रहा है, अरे यस और नो, भूख लग रहा है क्या, हाँ, यस, कमाल है यार, मैं तो पूरा दिन नहीं खाता हूँ, तो फिर बोला आप इतना मोटा कैसे हो गए, नहीं खा के, फ्री में मिलता है हवा और पानी, ठीक है, गैस, हाँ, किसी दिन सॉलिड बन जाऊंगा मैं भी, ठीक है, तो दिस इज चलो अभी तो इसको खत्म करना है यार, नहीं तो फिर ज्योग्राफी शुरू करना है कल, ठीक है ना, तो इतना जल्दी, अभी और आधा घंटा है, हम लोग फटाफट कर लेंगे, ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, राइट, चिफ्टेंसी सिस्टम ना, ठीक है, या उससे पहले हम लोग करते हैं जेरोंटिक्रेसी में, लेट्स सी बुलियांग ना, बुलियांग सिस्टम, यू ओपन द नोट्स, आप लोग देखो, मैं बोलूंगा कुछ कुछ, जहां पे समझाने का बात है वहां समझ ले, ठीक है, तो gerontocracy, that means one of the institution that is followed among the Apatanis, right, one of the I would say one of the most advanced and sophisticated tribe of, ठीक है, ये बात हमको आज बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैसेज आया हुआ, ठीक है ना, ठीक है, तो मतलब मैं यही बोलूंगा कि ऑल द ट्राइब्स आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्या, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट, so there is no set parameter for finding out, right, which tribe is more advanced than the other, right, कहने का मतलब ये है, एक सिंपल सा दिमाग में लगाना है, right, अगर मैं बोलूंगा the tribe which is more politically empowered, if you are politically, right, more empowered, right, if you have more representation, obviously you are more advanced, no, अरे yes or no, तो ये सब बात नहीं बोलना है दोस्त, ठीक है, कौन एडवांस है कौन बैकवर्ड है, ये सब बात नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर पैरामीटर का बात करेंगे तो देन यू हैव टू फॉलो द यूनिफॉर्म पैरामीटर ना, ओके, देन यू विल फाइंड द, राइट, द कम्युनिटी व्हिच यू ट्रीट एज बैकवर्ड, दे आर द मोस्ट एडवांस्ड, यस, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल पावर तो सबसे पहले है ना, दैट गिव्स यू, राइट, दैट गिव्स यू पावर, राइट, पावर टू डील विद इकोनॉमिक अफेयर्स, that gives you power to deal with social affairs, yes, so I don't agree with this, okay, so I'll not use this term, right, of differentiation, right,
in terms of advanced or backward, no, right? I'll treat them as tribe only. Okay. And yes, that is true. They all are at different level of, right, different stages of development on different parameters, right? On economic parameter, one tribe is more advanced than the other, right? On social parameter, you'll find one tribe, two tribe more advanced than other tribes. Okay. On political parameter, you'll find one tribe, right, dominating the entire tribe. अरे yes or no? ठीक है, इसलिए ये सब बात को नहीं करें, प्लीज अवॉइड. ओके, क्योंकि कोई सेट पैरामीटर होना चाहिए. इफ यू वांट मी टू डिस्कस, right, let us have the parameters first of all, right? So this is your number one point. So it was just a general statement, right? So I said, uh, one system of local governance that is followed among the Apatanis, right? Okay, that is called as Boolean, right? तो क्या बोलते हैं? Boolean system, ठीक है, right? Now coming to the historical, right, historical aspect, ठीक है, historical aspect. You know that Apatanis are having a very, right, very, what to say, they are having a very close knit society, right? The whole, right, whole Apatani tribe is spread, right, is spread in 7 villages in lower Subansiri district, right? And that is, right, that is tightly knitted with each other, okay? They all are descendant of Abotani. बोलने Abotani तो पता होगा ना? नहीं, ये तो मालूम होगा ना? चलिए, अच्छी बात है, ठीक है. अब ये सबका नाम लेना, ग्रैंड डॉटर और सबका नाम नेने और सबका बात बोलूंगा तो ठीक नहीं है, छोड़ देना है. बस इतना समझना है, जैसे कि आदि ना, गालो, राइट, यू हैव अपतानीज, निसीज, तागिन्स, राइट, ये सुनो, ठीक है. तो these tribe, they consider themselves as the descendant of क्या, Abotani, ठीक है, same ancestor, common ancestor, ठीक है. Yes or no? So this is what we have, right? We have under the Apatanis. Now this Boolean is a body of representation which is clan based. याद रखना है, clan based, ठीक है. Clan तो समझते हैं ना? What is a clan? A group of family, हाँ, ठीक है. तो clan based होगा, right? And from that particular clan will have representation, right? Representation according to what? According to age, right? कैसा? Elders, middle age, and then you'll have young age, ठीक है, right? So when this system of representation called Boolean started in Apatanis, right? It was originally called as Neha Boolean. क्या बोलते थे? Neha Boolean. That means there was only one institution, right? That was headed by क्या? Headed by elders in the society, elders of the clan, different clans, ठीक है. 7 villages, you all know the 7 villages. Population तो पता ही है, ठीक है. कितना population है? लगभग दोनों का याद रखना, मोमपाज और अपतानी, लगभग दोनों का पॉपुलेशन सेम है, ठीक है ना? अरे ऐसे याद रख लेना है. दूसरा, कहां पे कंसंट्रेशन है, यू ऑलरेडी नो, राइट? आई सेड 7 विलेजेस, ठीक है. विलेज का नाम भी पता होगा. अरे ये सुनो, बुला, हरी, सब तो पता है ना, डोंग, ठीक है, होंग, ठीक है, बामिन, मिची, बहुत सारा 7 विलेज है, ठीक है. तो ये हमारा स्प्रेड हो गया, ज्योग्राफिकल स्प्रेड. बुलियंग्स, राइट, बुलियंग्स में मैंने क्या बताया कि यू विल हैव क्लान बेस्ड रिप्रेजेंटेशन हियर, राइट, क्लान बेस्ड. तो originally it was called as, right, Neha Boolean, but with the passage of time and right, and with more diversification in function, right, especially the developmental function and right, and the function related to arbitration, right. These Booleans are basically considered as the arbiter of justice, ठीक है. क्यों बनाया जाता है इनके लिए? क्योंकि देखो जनरली क्या होता है कि जो डिस्प्यूट है, ठीक है, Booleans take up those dispute once the dispute is above the individual level, right? Individual level पे अगर dispute है, they will not take up the issue, right? Are you getting my point? They will take up the issue only when it is above the level of individual, right? Concerning maybe 2 village, right? Maybe concerning 2 clan of the same village, that is also possible, right?
So this is how, right, this is how the functioning has diversified. And later on what happened, three hierarchy based on what, based on age group evolved under Neha Bullian, right, which is now called as what, Akka Bullian. Then you have Yapa Bullian, and then you have the third one that is called as Ajang Bullian. ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अरे मैंने क्या गलत बोला है क्या? हंस क्यों रहे हो? अपने ऊपर हंस रहे हो कि मुझे याद नहीं आ रहा? चलो अच्छा बात है, हंसो, ठीक है। तो अक्का बुलियान क्या है वो? That is right, that is the bullion consisting of the elder member of the clan, ठीक है ना, elder member of the clan. और वो क्या है, supreme body है, right, that is going to, right, that is going to take all the calls related to, right, related to developmental issue or so related to the adjudication of dispute. Okay, right. Then you have, right, then you have Yapa Bullian, ठीक है, that consists of what, middle aged group, right, middle aged group people who sit in the proceeding of the bullion, right, and they assist whom, they assist akka bullion, जो elder है उनको assist करेंगे. They will always report to the developmental, right, report to the status of developmental, right, developmental activities which they have carried out in the village to the akka bullion, ठीक है, मतलब उनको assistance देंगे and उनको report करेंगे, ठीक है. Then comes the young generation. वो कौन है? Ajang Bullian, right, represented by Ajang Bullian, who act as messenger, who act as assistant, who act as the force, right, the blood and, I said, the blood and energy for carrying out क्या, carrying out developmental activities, right. So that is your Ajang Bullian. बात समझ में आ रहा है? तो इसी को बोलते हैं gerontocracy, मतलब right, मतलब one system of governance which is based on what, which is based on a institution consisted of elder, right, elder people, right, or sure those people of क्या, people of wisdom, right, people who are respected, people who are, right, who are of old age, and they have, right, they are well versed in customary law, right, they have high oratory skill, ठीक है, they have high level of intelligence. बात समझ में आ रहा है? They are man of integrity, ठीक है. देखो बुलियांग में क्या होता है, जनरली वुमेन डू नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है, मतलब थ्योरेटिकली देखो, थ्योरेटिकली क्या है, मोमपास जो बात याद रखना है, सॉर्गन्स जो है, मंगमा जो है, उसमें थ्योरेटिकली अलाउड है ना, वुमेन कैन पार्टिसिपेट, बट नन ऑफ द वुमेन, राइट, हैव बिकम और से और लेड मैग्मा टिल डेट, अभी तक कोई हेड नहीं बने, ठीक है. बट इन आपातानीज वुमेन आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट, दैट मीन्स इन बुलियांग सिस्टम, ठीक है. दिस इज वन डिफरेंस यू विल फाइंड हियर, ठीक है. So this is how, right, this is how the, right, the I would say the system has evolved and right, and that deals with different function. The main function is to, right, is to guard their community, guard, secure, right, provide security to, right, security to their community, ठीक है. बात समझ में आ रहा है? तो security from what? Security from, right, from external attack, right, attack by other tribes, yes or no. तो उनका काम क्या था, आर्बिटर का काम करते थे वो, ठीक है. मेनली बुलियांग का काम था आर्बिटर, मतलब क्या, एडजुडिकेशन कर, ठीक है. एंड दे यूज्ड टू टेक अप बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, ठीक है. कैपिटल पनिशमेंट देने का भी अधिकार है किसको, बुलियांग को, ठीक है. राइट, इफ यू हैव क्रिमिनल ऑफेंसेस लाइक मर्डर, राइट, यस और नो. बात समझ में आ रहा है? अगर मर्डर कर रहे हैं आप, ठीक है, तो कैपिटल पनिशमेंट कैन आल्सो बी गिवन इन एक्सट्रीम केसेस, ठीक है. Right, that means those heinous crimes are treated very seriously by Bulliang, ठीक है. Bulliang always preserves the individual characteristics, right, the individual freedom of, right, of Apatani, right, unless until the issue concerns the whole village or two village, right, that issue would not be taken up by Bulliang, ठीक है. Individual matter है, settle by yourself, right, settle at family level, right, yes or no. So this is how, right, this is how the Bulliangs have functioned, ठीक है. Is this point clear? तो
we have seen this. Now coming to the next one, you have Jung system that is followed by Sardukpens, right? They have their population around कितना है, बहुत मतलब लिमिटेड पॉपुलेशन है उनका, 3000 के आसपास ना, 3400 के आसपास होगा. And they are concentrated in the West Kaming, right? West Kaming region, West Kaming district. They follow again this, right, this system of gerontocracy, right, which is called a Jung, Jung, ठीक है ना. और वो भी किस पे बेस है, that Jung is consisted of the elder member of, right, the elder member of the elder member of the clan, and then they resolve the dispute according to, according to, you know, according to the deliberation we have with the Jung, right. तो ये बेसिक आपको समझ लेना है कि मतलब दो जो हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, बुलियन सिस्टम is having reference in the historical document also, right. But we do not have such documentation for Jung, right. So I have given you a brief information regarding the indigenous council prevalent under, right, or followed by Sadukpens, ठीक है. Coming to the chieftaincy system, right, chieftainship, ठीक है. अब उसमें बहुत सारे ट्राइब है, नॉक्टे, वांचे, राइट, वांचो, देन यू हैव खामती ना. तो ये जितने भी ट्राइब है, ये क्या फॉलो करते हैं, दे फॉलो चीफ्टेंसी सिस्टम, ठीक है ना. तो चीफ्टेंसी सिस्टम क्या है, मैंने आपको बताया, राइट, दैट इज बेस्ड ऑन हेरिडेटरी, राइट. Okay, if you belong to one particular clan, right, which is considered as, or which is respected as, right, as what as right, as the descendant of, right, of the royal clan, right, then by birth, right, then by birthright you would be becoming the chief of क्या, chief of such institutions, ठीक है. chieftaincy system. तो यहाँ chieftaincy system में याद रखना है कि this is one of the most oldest institution of governance we have among the tribes in Arunachal Pradesh, right. And this system developed, right, in response to the threat, right, the threat the tribal people faced from, right, from the enemies from eastern and, I said, from eastern and southern side, right, especially from Myanmar, ठीक है, और southern side, ठीक है. इस एरिया से उनको थ्रेट मिला, और इसके वजह से क्या हुआ, they developed a chieftaincy system, because in the times of war, a person who is having high caliber मतलब intelligence, right, a person who has high what, high skills, right, a person who is capable of, right, of safeguarding its tribe, right, that person was considered as chief, ठीक है. उनको मान लिया जाता था चीफ, ठीक है, जो डेंजर से आपको बचा ले, है ना. A person who can lead the community in war, yes or no. So that is your chieftaincy system, right. Whosoever led, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि मतलब the whole, right, this whole river, he says what, this whole river is having a sour water, ठीक है, और सच में किसी ने टेस्ट किया और बोला सच में sour है, तो people started believing इसका पास magical power ना, ठीक है. तो chieftaincy system says that, right, that a leader is not made, a leader is born, right. इनका कहने का मतलब ये होता है कि जो लीडर है वो बनता नहीं है, कैसा होता है, पैदा होता है, ठीक है. एंड द वर्ड्स, राइट, words by the mouth of the chief is considered as in some of the tribes that is considered as the word of God, क्योंकि उनको धरती पे भेजा गया, ठीक है. तो कहीं कहीं पे देखेंगे आप चीफ सेंटिस सिस्टम इज मिक्स्ड विथ theocratic institutions, ठीक है. Is this point clear? So this is what we see among these these tribes. आपको देखना है नॉक्टेज ना, देन यू हैव, राइट, मैंने नाम दिया हुआ आपका, जस्ट, राइट, यू कैन सी दैट. देन यू हैव वांचो ना, वांचो में आप देखेंगे वहां पे पटकाई हिल ज्योग्राफिकल स्प्रेड जो मैंने दिया हुआ है, एंड द डिस्ट्रिक्ट हैज बीन मेंशन्ड एज तिराप ना. तो याद रखना ये इसलिए तिराप रखा गया है, आप इसको गलत मान सकते हो. this district has been retained because of what, because in 2000 till 2012 there was no Longding district na.
Longding district came into existence in the year 2012, and I have given you the data related to 2011 census, right? That is why I have mentioned Tirap. You can make a correction here and you can update that with Longding. ठीक है, one choose के लिए, right? Is this point clear? They have their population concentrated in where? Longding district of Patkai Hill region. और अगर कुछ याद ना रहे तो बस आपको क्या करना है, नॉक्टेस ना वन चोज, कुछ याद ना रहे तो क्या करना है, पटकाई हिल लिखना है, पटकाई हिल रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम, यस और नो, ठीक है. देन कमिंग टू खामतीज. खामतीज का एक थोड़ा सा स्पेशलिटी याद रखना है. दिस इज द ओनली ट्राइबल कम्युनिटी इन अरुणाचल प्रदेश which has chief at two level, right? Two level, one at territorial level, that means at village level, and the other is at whole tribe level. Whereas in all other tribes which follow chieftaincy system, they have chief at territorial level only. मतलब समझ में आ रहा है ये बात टेरिटोरियल लेवल का? अरे जैसे मान लो एक गांव है छोटा, ठीक है ना, उसका कोई चीफ है, 4-5 गांव मिला के फिर एक बड़ा चीफ ना, तो क्या हो गया, ये टेरिटरी के बेसिस पे ना. इज दिस पॉइंट क्लियर? पर खामतीज में क्या है, यू हैव क्या, you have chief at the territorial level and then at all tribe level, that means the entire Khamti, right? But अगर दूसरे ट्राइब में देखेंगे तो क्या, you'll find territorial level but that is restricted to a particular district, a particular block, yes or no? They do not have chief at tribal level. That means if there is no head, right, taking decision for the whole tribe, ठीक है? yes or no? It is only Khamti, केवल खामतीज में ही है. Clear? So this one, right, one point you should keep in mind. Then apart from that, जो हम लोगों ने जितना कुछ बात किया, उसके बाद you have some other institution or traditional, right, or you can say the institution of temporary nature, right, which is seen among two major tribe in Arunachal Pradesh, Nisis and Tagins, ठीक है. उसमें एक टेम्पररी काउंसिल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गिंदुम, राइट. दैट गिंदुम इज कॉल्ड इन सेन, राइट, इन व्हाट, क्या, हाँ मतलब कब बुलाया जाता है, इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, राइट, व्हेन यू हैव डिस्प्यूट, राइट, व्हेन यू हैव डिस्प्यूट ऑफ क्या, ऑफ कैसा सीवियर नेचर, ठीक है. एंड दैट गिंदुम वुड बी कॉल्ड बाय होम, ए मीडिएटर, ठीक है. एक मीडिएटर होंगे जो किसके बीच में मीडिएट करेंगे, बिटवीन द डिस्प्यूटिंग पार्टीज, राइट. एंड दैट गिंदुम वुड बी कंसिस्टेड बाय होम, कौन वहां पे गिंदुम को कौन रिप्रेजेंट करे, elders of different clan, right. If it is a multi clan dispute, obviously the elders from all the clans will sit in that गिंदुम, yes. और उसके बाद क्या होगा, चर्चा, हाँ, राइट, दे वुड डू द आर्बिट्रेशन, ठीक है. तो जो मीडिएटर होते हैं उनको बोलते हैं लामपो, ठीक है. और वो गिंदुम बुलाएंगे एंड सैन, राइट, एंड द इशू वुड बी deliberated, that would be resolved, right. There is a provision of compensation, right, imposing fine, जिसको हम लोग नहीं बोलते फाइन लगा देगा ना, नहीं बोलते, अगर नहीं आए तो आप फाइन लगेगा, ठीक है. और फाइन सिस्टम तो बोलने की जरूरत नहीं है, कभी कभी गाड़ी में टच होने से भी फाइन लगता है कि नहीं. तो वही फाइन सिस्टम है, दैट इज मोर प्रेवलेंट अमॉन्ग द निसिस. एंड निसिस तो मालूम है, दे आर द मोस्ट आई वुड से दे आर द मोस्ट पॉपुलस ट्राइब, राइट. सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, दैट इज 2,49,000 ना, ठीक है. फिर तागिन्स जो है वो और निसिस का आपको डिस्ट्रिक्ट, यू नो द ज्योग्राफिकल स्प्रेड, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, राइट. यू हैव केके डिस्ट्रिक्ट ना, कुरुंकुमे, खरादादी, ठीक है. यू हैव कामले, यू हैव पापुम पारे ना, यस और नो, यस और नो, ठीक है. तो लोअर सुबानसिरी ना, ये सारा रीजन है जहाँ पे इनका पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स आउट से, राइट. एंड जो तागिन्स हैं उनका मेनली आपको कंसंट्रेशन कहाँ मिलेगा, दापोरिजो रीजन, ठीक है ना, अपर सुबानसिरी,
ठीक है, तो उनका भी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इट इज अराउंड 63,000, कुछ इस तरह से देख लेना आप डेटा ना। तो दिस इज योर गिंदुम ना, उनको हम लोग गिंदुम बोलते हैं। दैट इज ए टेम्पररी काउंसिल, याद रखना है। दैट इज कॉल्ड ओनली इन द in the situation when you have some severe dispute, some dispute of I would say dangerous nature na. So that can be, or once one dispute which can flare up and that may acquire a interclan nature, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग टेम्पररी काउंसिल बुलाते हैं, ठीक है। So this is about the traditional village council. Tomorrow we'll start with geography, ठीक है। तो गो थ्रू वन रीडिंग, ठीक है। कल हम लोग क्या क्या स्टार्ट करेंगे, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ of the topic will start tomorrow. So first of all we'll deal with the geological structure of the northeastern region, and for that we have to follow the geological structure of the whole country, right? That means we'll follow the geological history, how the Indian plate has behaved in geological time, what major events have taken place, how this eastern part of, I said, the eastern part of Indian plate has evolved, okay. And that will take us to the next point of discussion, next topic of discussion, and that is your physiography and topography of northeastern region, ठीक है। तो टोपोग्राफी, फिजियोग्राफी, जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड देन ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है ना। ये सारा टॉपिक को हम लोग कल टेकअप करना, क्लियर। तो 2 days फॉर नॉर्थ ईस्ट, 1 day फॉर अरुणाचल, ठीक है। अब बहुत आराम से होगा, बिकॉज जैसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट खत्म करेंगे बहुत सारा चीज अरुणाचल का क्लियर हो जाए, ठीक है। विद दिस पॉइंट क्लियर, ठीक है। सो हैप्पी लंच, थैंक यू। James Tying, your suggestion is fine, but that is for research and academic purpose, my friend. If I go for a lecture, a single lecture on one tribe, right, to try to understand the relevance of the topic, right, what you can expect from the topic in the main examination, only one question, right. So we have to be careful. We are dealing with a competitive exam, not I mean covering those topics for academic purpose or research purpose, okay. Thank you. No. Intra. Between tribes. Between different clans of a tribe. Let me see. Clans of tribe. Okay. Intra.